Sorry, there was my mic was probably on mute, and I've sorted it out. So, welcome to Zbit's live streaming session on the app, on the Zbit app, as well as on YouTube live streaming, where we are live now on both the platforms. And I am here to talk about a really interesting topic today that I'll be revealing very soon. But before that, I'll just give you a recap of whatever I talked about in my last live session, right? And if you were there with me, you would remember all the pointers that I talked about, all the key, parameters and all the key topics that I discussed in detail when it comes to major cryptocurrencies in the world, right? On top of the list was quite easily and quite there are no surprises about it, was Bitcoin. We discussed Bitcoin, why it was founded in the first place, what kind of circumstances led to Nakamoto begin and come up with uh, you know uh, Bitcoin in the first place. Why was it launched? What kind of a market we were seeing in the world during those times? It was probably the year 2009, and we discussed why Bitcoin matters so much. We discussed its use cases as well, and we discussed who were the founders, what was the philosophy behind it. Uh, why it brought so much change in the market, and how it has grown in leaps and bounds to become what it is today in the world of cryptocurrency, how much power Bitcoin holds. And not just Bitcoin, we discussed about Ethereum as well. Again, all its use cases, what is the science behind the launch of Ethereum, how multiple projects are built on Ethereum. And we also discussed about XRP, how it is it was launched with the purpose to be, for international fast transfers, cheaper and fast modes of transfers. That is its main use case. Banks also use it. I'm very much talking about Ripple here, XRP. And not just Ripple, we discussed around six major cryptocurrencies. Obviously, Bitcoin was first, Ethereum was second, and then we discussed about third one, XRP. We discussed Cardano. We discussed Solana, and yeah, then we also discussed about major meme coins in the world. Right? We discussed about Dogecoin, why it was launched, how it was promoted by the very influential Elon Musk. We also discussed about Pepe coin, and we also discussed about Shiba Inu as well. Right now, all these coins you can probably have a look at on Zbit. Right, Zbit is the platform that you are currently on. It is one of the most safest and secure crypto exchange platforms that helps you deal in future trading, right? It allows you the opportunity to grow your money, invest your money, and do trading day in day out, and invest on all these coins if you want. But what I obviously always look to stress upon is the fact that you should do all this trading only with some kind of an analysis and some kind of research that you have done on your end, so that you can be sure that you are investing in the right direction. The best part here is when you predict the future, you can invest. You can predict whether it is going, the price will go down, or whether the price will go up, right? You can obviously do that. That is one major advantage when it comes to the future trading, right? Now, uh, I will be the okay. Meanwhile, we also discussed all these coins. Meme coin. I was talking about meme coin. I was discussing about Dogecoin, then Pepe coin, Shiba Inu. We discussed about all these coins and their
use cases, if any, right? We also discuss whether you should invest in these coins or not, and I advise you that you can invest, but you should not look at it from the point of view of a long term investment. You can probably think of it as something short term, and you can probably think of them as if it works, it works. If it doesn't work, you don't need to get stressed over all these coins, because they don't actually have some kind of fundamental utility attached to it, right? And This was the major topic. We also discussed a lot of other things in the past on how to avoid scams as well. So that was my last to last session. I hope that you have now some kind of an idea about all these major cryptocurrencies that are playing a role in the crypto market. And with that, I am going to be revealing the topic for the day very soon, in the next 1 or 2 minutes, probably. I'm just waiting for a few more people to join in. I can see how many of you are now live on the Zbit app, and I obviously want you to make some kind of deposits on the platform that is Zbit, which is very much safe and secure. I have my backend right in front of me, and I will be looking at how many comments and what kind of comments that you have to make. I am very much tuned in, and I am looking for more questions, more doubts, anything related to deposits or withdrawals that you have. I will be ready to help you out, right? Now, I will be revealing the topic for the day very soon. I'm just waiting for a few more people to join in before we can begin with a very interesting topic now, right? And I will be giving you a step by step guide as to how and what this topic involves, and how you can get a better understanding of it. Look, I am always I've always been a kind of person who likes to go step by step, and I'll always like you to learn something from our live session. That's what I am here for. And if you have any doubts regarding deposits or withdrawal, I'll be ready to help in that context as well. I am looking at more people who are joining in on the Zbit live stream, as well as on the Zbit app as well, right? If you can just give me a minute, I will be uh, looking to clear all your doubts, as well as reveal the topic for the day, which is obviously a topic that requires some kind of attention, and is a topic that will enhance your knowledge. Now, if you are seeing Bitcoin right in front of your screen, I can see it has grown. It was at 94 something a few minutes back, and it has grown. I will tell you the reason as to why and how and what kind of news is out there now. I obviously have a habit of looking at what is the current news when it comes to cryptocurrency, and I look at what the latest situation of the market is as well in this period of my live session as well. I also have a very good habit of sharing something unique or a rare fact related to cryptocurrency at the end of my live session. So if you can stay tuned till that time, I will be sharing a crazy or a unique fact. But in the meantime, all I want to do is keep your I want you to do your what I want to do is that I want you to keep your ears
open, I want you to deposit on Zbit. That allows you to grow your money gradually, and do some kind of research. That is why I am here on your screens as an anchor to help you grow and uh, help you deposit money, or if you have any doubts relating to withdrawal, I am also here to help you make those withdrawals as well. If you have any doubts, you can probably write it on the chat, Zbit chat, right? That is there. It says say something. You can probably key in your doubts and queries on the Zbit app. A new user has joined in. Hi to user 237636. Please, I want to withdraw. He asks or she asks, I'm not sure what your gender is, but if you want to make any withdrawal, you will have to let us know how much and what exactly you are looking to withdraw. I will be sharing your details with my team now, and I will look into solve your queries. If you can just give me a second, I will look to solve your query and look into, if you can just give me a second, I will look into your withdrawal. And solve this out. This is just in particular for our user that has had a query and we are solving it out. It is user 237636. Please stay tuned. I am looking to answer your and clear your doubt, right? If you can just give me a second, I will look to answer your question and solve your query as well. And if you can just give me 1 second, I am just looking to sort a few things out from my end. I am looking to better my angle in the first place so that you guys can probably have a better view of me. I will look to solve this thing out. Right now. Right. I hope that I am audible now, and I am looking to solve user 23766 problem right now. Meanwhile,
while my team is looking into solving this user's problem, I am looking to reveal the topic for the day, right? And the topic for the day, if you can pay close attention, the topic for the day is, why do governments regulate cryptocurrency? What are the various reasons as to why the government regulates cryptocurrency? It's a platform that governments are very much wary about in the current times, and they are looking to, you know keep a good track of all that is happening in the world of cryptocurrency. And I will look to answer and discuss in quite an in-depth live session today, why governments actually regulate cryptocurrency, what is the philosophy behind it, what are their own reasons behind it. And it's a quite in-depth topic, and I will look to answer it one by one with a step by step process as to why they do that, what are their own reasons, and reasons that they can justify for themselves, and are important when it comes to cryptocurrency, and how the country that they operate in, that they are at the helms of, are governing, how operations kind of get affected when it comes to their regulations and their monitoring of all these cryptocurrency aspects, right? Now, i I All right. So I hope users 237636, your problem will be looked at. We are looking to it. If you want to do a withdrawal, you can obviously go ahead with it and make your own withdrawal on the app. It's a very simple process. There are no there is no rocket science involved in it. You can obviously quite easily find the withdrawal button on your app when you're logged in, and you can make your withdrawal then and there. If you've made good profits, I hope that you have made. A lot of people make quite a lot of profits on the Zbit app, and obviously they are making newer deposits and earning money, and therefore able to make these withdrawals, right? You can also do that. I would advise you to deposit more on Zbit, and invest in the market, but only after good research, good study, थोड़ा एनालाइज करके और थोड़ा मार्केट के बारे में रिसर्च करके, कॉइन्स जिन पे आप बेट्स प्लेस करना चाहते हैं, फ्यूचर्स प्रिडिक्ट करना चाहते हैं जिनका, आप उनके बारे में थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए, राइट? नाउ, with that, I am going to be coming to the topic of the day, which is, why do governments regulate cryptocurrency? I hope that you stick with me all this while I discuss this topic in quite a lot of detail. Now, so governments basically regulate cryptocurrency for their own reasons, and there are a lot of reasons that I can list. They are practical reasons, they are economical reasons, and they are security reasons as well. The main reason here is not just to control it, and so obviously controlling is not just one reason, but why they want to control it, and why there is obviously a lot of security involved, there is a lot of other activities involved. I'll get to in the details of all of it one by one. And with that, I'm going to begin with the topic for the day, which is, why do governments regulate cryptocurrency, right? Now, the very first reason why governments regulate cryptocurrency is to prevent financial crime. क्या है रीजन नंबर वन? फाइनेंशियल क्राइम प्रिवेंट करने के लिए.
फाइनेंशियल क्राइम्स ऑब्वियसली बहुत तरह के हो सकते हैं। वो फाइनेंशियल क्राइम्स वही नहीं है खाली जो क्रिप्टो की दुनिया में होते हैं, उसके बाहर भी होते हैं, लेकिन क्रिप्टो में भी होते हैं। एंड आई जस्ट लिस्ट डाउन दी स्मॉल यू नो crimes one by one. They are short crimes, they are not I'm sure you have a lot of idea about some of these, right? Now the number one is money laundering, right? Money laundering is a very popular crime that goes on when it comes to you know cryptocurrency, and a lot of big players in the market do such kind of crimes, and money laundering therefore is at the top of the very list when it comes to financial crimes, right? To prevent money laundering, crypto is something that can be used, and misused is actually the right word here. But it is not just the only one. There are also activities related to terrorism that involved financing through crypto, and it obviously it gets very difficult for governments to kind of regulate it, because obviously it is peer to peer transactions that are going on, and it becomes very difficult to monitor them. And so terrorism financing is another reason. Now the third reason is obviously crimes such as tax evasion. A lot of people earn plenty of money, but to evade taxes, they kind of make transactions in crypto, which are again very difficult to track, and it becomes really difficult for governments to manage and get at the roots of it. So to prevent financial crimes such as tax evasion as well, crypto can be misused, right? Again, another point, another crime that does go on is illicit cross border transfers, right? Transfers that involve huge amounts of sums. They are exchanged in the form of cryptocurrency, and these four are therefore major reasons as to why financial crime is one of the top priorities of preventing financial crimes, is one of the top priorities of governments uh, to look at, and to monitor and regulate cryptocurrencies, right? Now how this is regulated from the point of view of the government is that they enforce basically KYCs. You might have heard of KYC, or know your customer, or there is another term that is associated that is not that popular, but anti money laundering, or AML rules activities are or these two activities, basically getting your KYCs done and your AML done, is probably government's way of regulating activities that are involving the use of cryptocurrency, right? So number one reason, and obviously this had to be the very foremost reason, the very top of the pile kind of reason when it comes to regulating cryptocurrency, and the government's reason behind doing it is to prevent financial crimes, right? They're very common, and the governments have to deal with it, and so it becomes their prime objective to prevent all these activities, whether it is money laundering, whether it is illicit body cross border transfers, or it is tax evasion, or it is financing all these terrorist groups, right? So preventing financial crimes is one of the top reasons as to why government regulates cryptocurrency. If you've just joined in, I am talking about how do governments and why do governments regulate cryptocurrency. That is the topic for the day today, and I am going to be discussing that in quite a lot of detail. An in-depth analysis I'll be doing at one by one. I'm looking at all the pointers. I welcome you to the chat. I welcome you to the Zbit chat, as well as people who are joined on YouTube as well. I welcome you all. I hope that
you are enjoying my conversations and you find them really engaging. If you obviously have any doubts, I will be clearing them as well, one by one. You also have a few coins that are opened right in front of my screen and on your screen as well. And so we are going to get to the second topic of not the second topic, but the second point when it comes to why governments regulate cryptocurrencies. What is the reason behind it? The second reason now is obviously to prevent the stakeholders over here, right? Who are the stakeholders? Stakeholders are the investors, the traders, consumers, the users, right? To prevent how and whether they don't get into any kind of troubles later on, they don't get affected by these scams and some malpractices that are going on. It is important for governments to protect these consumers, to protect these traders, protect these investors, right? How do they do that, and what kind of things do they need to protect the users and the investors or traders from? I am going to be giving you a short list about that. So, the number one is they want them to be protected from scams and rug pulls, right? Scams, I've already discussed in my, last to last session about how to avoid scams. Scams are obviously very popular when it comes to the world of cryptocurrencies, and they kind of have a really bad impact and a really bad impression when it comes to the minds of the traders and investors who are invested on the platform, whether it is any platform. Ours, I can be very sure of. Zbit is plenty pretty. It is very pretty secure, and it is very transparent as well as safe for all these traders. But what I want to tell you about is that scams are pretty common in the world of cryptocurrency, and you can obviously you have to be vigilant, you have to be alert, you have to be cautious, you have to be on your toes, and you don't have to make any mistakes that scammers who are also advancing at a very fast rate, who are learning, come up with new scams. एंड नए नए स्कैम मार्केट में इतनी जल्दी जल्दी आ जाते हैं कि जब तक एक इंसान बचना सीखता है एक स्कैम से, दूसरा स्कैम मार्केट में ऑलरेडी आ जाता है. विद दैट आई कैन सी अ लॉट ऑफ न्यू पीपल आर जॉइनिंग इन. I absolutely love that all of you are streaming on this live stream and are joining in one by one. You're increasing the numbers, and if you have any doubts, you can obviously ask me. The topic for the day is how to avoid. The topic for the day is why do governments actually, regulate cryptocurrency? That is the topic for the day, and the topic for the day has been chosen in sync with the times. There has been some kind of movement. A bill has been passed in the you know US as well. The senators have passed it, and it has brought in a few changes for the betterment, and we will discuss that as well today. And that is why this topic has been chosen as to why governments regulate cryptocurrency. Now, we've discussed two reasons. The number one reason as to why cryptocurrency is regulated is to prevent financial crimes that are being done by mal practitioners, whether it is terrorism activities, whether it is money laundering, whether it is tax evasion, or whether it is illicit cross border transfers, right? That was the first point, to prevent financial crimes. Now the second reason that we are discussing is to prevent all these investors, to prevent all these traders and the consumers, the users. How and what all things do they prevent you from? Number one on the list is obviously scam and rug pulls. Now the second is fake projects. A lot of fake projects are also there on cryptocurrency platforms that you have to be wary of.
you have to be very cautious of, safe from. And it is important, it becomes a responsibility of these governments to regulate all these fake projects and catch them as soon as possible, right? Now, there are exchange collapses as well, right? A lot of exchanges we have seen in the past have gone through, major collapses, and they have kind of, people have lost their money. And so governments also regulate you from exchange collapses as well. The governments are there basically to reduce all kinds of frauds that you see can happen in the world of cryptocurrency, right? The government is also there to, you know improve on transparency as well. And the governments are also there to hold all these platforms accountable, right? Now, with that, I can see a few more comments that are coming in from all our users. भैया कुछ गिव अवे कर दो प्लीज, नया यूजर हूं मैं. I will look into this, whether I can probably have a giveaway from my end. I am looking at it and I am looking to consult my team whether there is any giveaway. कोई भी giveaway होता है तो भैया हम आपको जरूर बताएंगे, तुरंत से तुरंत, right? My job is to help you. My job is to help you enjoy on the platform that is Zbit. आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको गिव अवे चाहिए हो, या कोई आपको कोई इशू आ रहा हो विड्रॉल में या डिपॉजिट में, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. I can give you as a new user. I am looking at it. I am looking at a few more offers that I can probably send your way. Just give me a few minutes. I will look into it and I will look to solve your query, right? All right. So, user 107531, I do have a giveaway for you right now, and I will reveal it. And it is not just there for user 107531, it is there for all of you. If you are a new user, and if you deposit a minimum of 3 USD, right? If you deposit a minimum of 3 USD, you will be, as a first depositor, getting 20,000 Pepe from me. You will be getting 20,000 Pepe from me, or 20,000 Shiba Inu from me, right? I will just repeat it again for all the users who are joined in on Zbit, or all the users who are joined in on द Zbit लाइव स्ट्रीम. अगर आप 3 USD, मिनिमम अमाउंट बता रहा हूं, अगर आप 3 USD डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलेगा एज अ न्यू फर्स्ट टाइम डिपॉजिटर, खाली उनके लिए ही है ये. अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिटर हैं और अगर आप मिनिमम 3 USD आप डिपॉजिट करते हैं Zbit के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से दो कॉइन्स हैं, हाँ, 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू, बिल्कुल फ्री.
बिल्कुल फ्री। एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर आप नए डिपॉजिटर हैं, आप मिनिमम 3 USD डिपॉजिट करते हैं, आप न्यू यूजर हैं, मेरी तरफ से आपको मिलेगा 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू बिल्कुल फ्री। आप देख सकते हैं ये शिबा इनू है, और आपको मैं पेपे भी दिखा देता हूं। दिस इज पेपे इन यूएसडीटी। मेरी तरफ से 20,000 पेपे और 20,000 शिबा इनू, इनमें से एक आपको फ्री मिलेगा अगर आप मिनिमम 3 USD डिपॉजिट करते हैं ऑन द Zbit app. You will have to obviously let me know your user IDs. I will have to check it out, and then I will be transferring from my end 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free. You will be getting 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my end. Bilkul free, 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 free. Right? Now, this is all for our new depositors. I have an offer for you. I will be talking about this offer in between again. But meanwhile, I will be getting back to my own topic for the day, that is why do governments regulate cryptocurrency? And I am discussing point number 2, that says to protect investors and consumers or users like you, right? किससे बचाने के लिए? स्कैम से बचाने के लिए, रग पुल से बचाने के लिए, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स कभी कभी कोलैप्स कर जाते हैं, उससे बचाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि हम भी हैं, Zbit एक प्लेटफॉर्म है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल रखने के लिए, फ्रॉड बचाने के लिए, और आपको किसी फेक प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट ना कर दें, ऐसे प्लेटफॉर्म से, ऐसे प्रोजेक्ट से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे, राइट? सो दिस इज द सेकेंड रीजन, especially, and this goes out for all the beginners in the market. This is the second reason as to why it is important for governments to regulate cryptocurrency. बहुत लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का रेगुलेट करने से क्या हो रहेगा, क्या कर लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ताकि आपको स्कैम से बचा सके, आपको जिस प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको अकाउंटेबल रख सके, उसको ट्रांसपेरेंट रख सके, आप किसी फेक प्रोजेक्ट में ना इन्वेस्ट कर दें, इनसे बचा सकें। थोड़ा ये प्लेटफॉर्म्स ट्रांसपेरेंट रहें, इसलिए वो रेगुलेट करते हैं। और आप किसी एक्सचेंज पे हैं और वो कोलैप्स कर जाए, तो ऐसे सिनेरियो से आपको बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट्स रेगुलेट करें, राइट? नाउ, 2 रीजन हो गए। आज हम ऑब्वियसली, एक बार जो लोगों ने अभी अभी जस्ट ज्वाइन करा है, आई एम आल्सो लुकिंग एट अ फ्यू मोर कमेंट्स दैट आर कमिंग इन ऑन यूट्यूब एज वेल। 3-4 people are enjoying their time on YouTube and listening to my comments and my topic for the day, that is आपने अगर अभी अभी ज्वाइन करा है तो एक बार फिर से टॉपिक बता देता हूँ, why it is important for governments to regulate cryptocurrency, right? हमने 2 रीजन डिस्कस कर लिए हैं। पहला है फाइनेंशियल क्राइम से बचाने के लिए, दूसरा रीजन है आप जैसे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको, उन यूजर्स को, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल को किसी दिक्कत में ना पड़ जाए, इसलिए गवर्नमेंट्स रेगुलेट करती हैं, ठीक है? आई होप मेरी लैंग्वेज बहुत सिंपल है और मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके आपको नहीं बता रहा हूं। नंबर 3 रीजन नाउ as to why governments regulate cryptocurrency is obviously very simple and very there's no rocket science attached to it. It is plain and simple, just to maintain financial stability, right? Financial stability maintain करने के लिए गवर्नमेंट्स क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स को और क्रिप्टो को रेगुलेट करती है। नाउ, अगर क्रिप्टो ग्रो करता है, राइट, विदाउट रूल्स, जैसे कभी किसी टाइम कोई सडन क्रैश कर जाती है मार्केट, राइट, या ये एक ऐसी चीज है, ऑब्वियसली सडन क्रैश होना, ये पूरी इकोनॉमी को बहुत मैसिव लेवल पे
इन्फ्लुएंस करेगा, बहुत मैसिव लेवल पे इफेक्ट करेगा, राइट? आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू विल अग्री ऑन दिस कि अगर देयर इज अ सडन क्रैश व्हिच कैन इम्पैक्ट द ब्रॉडर इकोनॉमी, और banks and institution are exposed to who are exposed to crypto, these banks and institutions can face a lot of risks as well, right? तो ये दो रीजन है कि सडन क्रैश हो जाना, क्योंकि वो एक ब्रॉडर इकोनॉमी को ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा, मेजर लेवल पे करेगा, और उसकी वजह से एक सेगमेंट नहीं, बहुत सारे सेगमेंट्स बहुत मेजर लेवल पर इन्फ्लुएंस होंगे, उनको इफेक्ट करेगा, उन पे स्ट्रेस आएगा उसका, और बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन एक्सपोज हो जाते हैं इन रिस्क पे। तो इट इज इसलिए इंपॉर्टेंट दैट जो ये फाइनेंशियल शॉक आ रहे हैं या कोलैप्स कर रही है मार्केट कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो की मार्केट कितनी वोलेटाइल है। अभी मेरे बैठे बैठे ही मार्केट में देख सकता हूं कितनी तेजी से बढ़ी है, राइट? इन द लास्ट फ्यू minutes as well, you can see the price of bitcoin as well has grown so much in the last few minutes that I am here। इस लाइव सेशन के दौरान भी आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से मार्केट में एक राइज आया है, मार्केट के प्राइसेस ऊपर गए हैं, और ऐसी में एक डिप भी आ सकता है। दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इट्स अ वोलेटाइल मार्केट। तो ये भी बहुत कॉमन चीज है। इसलिए इन फाइनेंशियल सिस्टमिक शॉक से बचने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन रहे। ये कौन कर सकता है? ये गवर्नमेंट्स करते हैं, और इसलिए उनकी तरफ से इंपॉर्टेंट है कि वो रेगुलेट करें क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स को, राइट? सो दिस इज रीजन नंबर 3 व्हेन इट कम्स टू व्हाई डू गवर्नमेंट्स रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, राइट? नाउ नंबर 4 रीजन, 3 रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। पहला फाइनेंशियल क्राइम्स बचाने के लिए, दूसरा इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स जो हैं प्लेटफॉर्म्स पे, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कल को किसी स्कैम में या किसी गलत प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कर दें, फेक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कर दें, उससे ले। तीसरा मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है? अब आते हैं चौथे रीजन पे, टैक्स कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट्स रेगुलेट करती हैं या करना चाहती हैं, राइट? कैसे हो सकता है? अब ये मैं आपको बताता हूं। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो जितने भी ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाती हैं, ठीक है? वेदर इट इज एनी एक्सचेंज और जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उससे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, whether it is you, me, you might also be investing on the platform on Zbit or any other platforms. So governments know that anyone who is invested on the platform does make good profits, right? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लियर टैक्सेशन रूल्स बने, वो टैक्स कर पाए आपको, राइट? Governments do like taxes, and governments get a huge amount of money. It's a huge source of revenue for the government, that from taxes, right? So governments are looking to tax all the profits that you get on cryptocurrency platforms, and so therefore they want some clear taxation policy or rules to be there that are adhered by a lot of the investors or all of them, right? सबके लिए यही स्टैंडर्ड सेट हो, और ओवरऑल उनकी कंट्री में जिस भी गवर्नमेंट की बात हो रही है वो टैक्स कर पाए प्रॉफिट्स पे इन सारे इन्वेस्टर्स को, राइट? सो दैट इज वन। गवर्नमेंट्स आल्सो वांट कि आपके जितने भी गेन्स और लॉसेस हुए हैं वो उनके पास पूरी रिपोर्ट रहे, right? They want reporting of all these gains and losses, right, that are involved in crypto transactions as well. Now, गवर्नमेंट्स को और क्या चाहिए? गवर्नमेंट्स को चाहिए
ये जितने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग इकोनॉमी में भी अपना फेयर कंट्रीब्यूशन दें। अगर आप ट्रेडिंग से कुछ कमा लेते हैं, गवर्नमेंट चाहेगी ऑब्वियसली कि आप उसमें से जितनी आपकी कमाई है, आप इकोनॉमी में भी आप उसका हिस्सा दें कुछ, राइट। तो ये जो है गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स कॉम्प्लायंस के कुछ चीजें, जैसे एक क्लियर टैक्सेशन पॉलिसी हो, या आपके गेन्स एंड लॉसेस की एक फुल रिपोर्ट रहे उनके पास, और तीसरा, अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसमें भी अपना हिस्सा चाहेगी। इकोनॉमी के तरफ आपने कैसे कंट्रीब्यूट करा वो ये देखना चाहेगी। देयरफॉर इट इज very likely that governments do like to get some kind of a fair contribution towards the economy, right। ये 3-4 मेजर रीजन है टू गवर्नमेंट क्यों टैक्स कॉम्प्लायंस चाहती है। नाउ ये सारी चीजें अगर नहीं होती हैं तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, ये टैक्स लीकेज है। टैक्स जो कि इकट्ठा करा जा सकता था वो अब गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि टैक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट और परहैप्स द बिगेस्ट वे ऑफ अर्निंग्स फॉर द गवर्नमेंट। उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम कमाने का या देश चलाने का यही है कि वो टैक्स करते हैं आपको। अगर वो टैक्स कहीं पर भी मिस आउट करते हैं तो उनको ये लग सकता है कि ये हमारा टैक्स लीकेज हो रहा है, काफी टैक्स और कमाया जा सकता था पर नहीं कमाया जा सका, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट्स और भी ज्यादा रेगुलेट करना चाहती हैं सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को, और ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री को। अपना, जिसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट अच्छे से घुसना चाहती है पूरे इंडस्ट्री में और अपना बोलबाला रखना चाहती है और उससे कमाना चाहती है और उसको एक सोर्स ऑफ टैक्सेस बनाना चाहती है, राइट। नाउ दिस वाज रीजन नंबर 4। कोई एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने कौन से 4 अभी तक पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं। एक बार आई जस्ट गो थ्रू इट वन बाय वन। On that note, I also welcome all of you users who are just joining or are joining in gradually. I welcome you all to the live stream. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज हाउ डू एंड व्हाई डू गवर्नमेंट्स रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट रेगुलेट तो करना चाहती है, कैसे करती है, क्यों करना चाहती है, ये मैं आज डिस्कस कर रहा हूं इन क्वाइट अ लॉट ऑफ डिटेल। दैट इज द टॉपिक फॉर द डे। मैंने अब तक 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं कि क्यों और किस तरह से गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है। नंबर 1 था फाइनेंशियल क्राइम्स प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नंबर 2 था कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स और यूजर्स जो कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे बने हुए हैं उनको स्कैम से बचाने के लिए, इन प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल रखने के लिए, इनको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, कल को आप किसी फेक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कर दें उससे बचाने के लिए, राइट। थर्ड रीजन मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करी जाती है, कल को कोई सडन क्रैश हो जाती है मार्केट, या बैंक्स और इंस्टीट्यूशन भी इसी रिस्क में इन्वॉल्व हैं और वो इन सिस्टमिक फाइनेंशियल शॉक से बच पाए। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, कल को एकदम से ऐसा कुछ शॉक या ऐसी कोई मार्केट क्रैश ना हो जाए जिससे बहुत ही भयंकर डिप आ जाए मार्केट में, या पूरा गवर्नमेंट का इकोनॉमी थोड़ा बहुत हिल गया है या कुछ मेजर ऐसा ना हो जाए क्रैश डाउन। इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गवर्नमेंट करना इसलिए चाहती है क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करेगी तो ये सिस्टमिक शॉक्स जो हैं, फाइनेंशियल शॉक्स जो हैं वो देश को, सरकार को कल को गिरा चढ़ा सकता है, राइट। नाउ चौथा रीजन जो मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया, टैक्स कॉम्प्लायंस मेंटेन
करने के लिए, टैक्स कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट्स जो है वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि कोई भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है या कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो प्रॉफिट बना रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी अपना कुछ हिस्सा दे पाए। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट्स उनको टैक्स करे, क्योंकि टैक्स ऑब्वियसली एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स टू रन। और ये जो टैक्स हैं, अगर टैक्स के मामले में उनको क्लियर टैक्सेशन पॉलिसी मिल जाए, रूल्स मिल जाए, अगर उनको एक फेयर गेन्स और लॉसेस की रिपोर्ट मिल जाए सारे इन्वेस्टर्स की या सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की, या उनको एक हिस्सा मिल जाए आपके प्रॉफिट्स में से इकोनॉमी की तरफ, तो वो बहुत खुश रहेंगे। और इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का टैक्स लीकेज ना हो, जिस भी चीज को हम टैक्स कर पाए हम टैक्स कर लें, राइट। सो दिस इज रीजन नंबर 4, टैक्स कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए, राइट। अब आते हैं पांचवे पे। इफ यू हैव जस्ट जॉइंड इन, आई एम डिस्कसिंग हाउ डू गवर्नमेंट्स रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाई डू गवर्नमेंट्स रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, राइट। I can see a lot more people have joined in. I'm also looking at, I'm looking at two platforms. I'm looking at zbit.com official app as well as on YouTube, right? I hope that all of you have some kind of doubts at the end of the day. If you have any doubts regarding, deposits or withdrawal on the platform, I will look to answer them as well. Now, but before that, I will get to the fifth point. Ki why do governments control cryptocurrency? Number fifth point now is that they want to control monetary sovereignty, right? Sovereignty. Now, ये कैसे करते हैं वो, ये मैं आपको अब बताऊंगा। गवर्नमेंट्स हमेशा ऑब्वियसली चाहेंगे कि उनकी नेशनल करेंसी मेंटेन रहे। आज अगर आप इंडिया में रुपी का प्राइस है, they would like to the Indian government would obviously like to control the price of a rupee, और नेशनल करेंसी को अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनका फॉरेन एक्सचेंज ऑब्वियसली इफेक्ट होगा। अगर आप यूएस में यूएस डॉलर का जो उनका करेंसी है, they would obviously want to protect the US government, and Donald Trump would obviously like to protect their dollar and the price of a dollar in the market today, right? Now, ये एक रीजन है मॉनेटरी सोवरेनिटी बचाने का। नंबर 2 रीजन, obviously they want to protect their central banking system, right? इंडिया में अगर हम बात करें, आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रिवेंट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखे या रेगुलेट कर पाए क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि कल को अगर क्रिप्टो रिप्लेस कर लेता है फिएट मनी को बहुत जल्दी, which could be happening in the near future, no one knows about it, right? It can weaken a country, and that is not just the purpose of that is not just the reasoning from the government, but it is also reasoning from a lot of experts, financial experts, that are pointing towards this thing, that कल को अगर क्रिप्टो करेंसी fiat money को replace कर देता है, then it can weaken a country's economic and policy tools, right? तो इसलिए important है कि गवर्नमेंट्स अपना कंट्रोल रखें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और रेगुलेट कर पाए क्रिप्टो करेंसी को, राइट। सो 2 रीजंस आई हैव जस्ट लिस्टेड। पहला, डॉलर को बचाने के लिए अगर आप यूएस से हैं। दूसरा, मतलब पहला है नेशनल करेंसी को बचाना एक तरह से, अगर आप इंडिया में हैं तो इट कुड बी रूपी। The Indian government would like to regulate and monitor the price of the rupee in the world, right? और अगर आप दूसरे रीजन पे आ जाएं तो वो है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरे सिस्टम को बचाने के लिए, एंड ऑल द बैंक्स दैट आर देयर इन अंडर द आरबीआई, इन सबको मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कल को कुछ अगर क्रिप्टो करेंसी ने रिप्लेस कर दिया फिएट मनी को, द ट्रेडिशनल मनी को, तो फिर इकोनॉमिक कंट्रोल और पॉलिसी टूल्स जो हैं बेसिकली वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इसे मैं
जितने हद तक रेगुलेट कर पाऊं उतने हद तक रेगुलेट करूं, नहीं कर पा रही हूं तो और करूं, राइट। तो मॉनेटरी सोवरेनिटी एक और रीजन है क्यों गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है क्रिप्टो करेंसी को, राइट। नाउ ये थे 5 रीजन एज टू व्हाई गवर्नमेंट्स आर लुकिंग टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अगर आपने अभी अभी ज्वाइन करा है हमारे चैट में, आई विल जस्ट गो थ्रू ऑल दीज पॉइंटर्स वन बाय वन। आज का टॉपिक है हमारा व्हाई डू गवर्नमेंट्स रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हमारे जीबिट लाइव स्ट्रीम चैट के सबसे ऊपर, अगर आप देखेंगे तो टॉपिक ऑफ द डे भी मेंशन्ड है, राइट। एंड द टॉपिक ऑफ द डे इज व्हाई डू गवर्नमेंट्स रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। अब मैंने 5 रीजन लिस्ट करे हैं, आई विल गो थ्रू इट वन बाय वन। सबसे पहले रीजन जो मैंने लिस्ट करा है कि व्हाई डू गवर्नमेंट्स रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी इज नंबर 1, टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइम। फाइनेंशियल क्राइम किस किस तरह के हो रहे हैं ये भी मैंने डिस्कस करा भाई। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है कहीं ना कहीं, आपने सुना ही होगा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, काफी लोग करते हैं और इस क्राइम में फंसते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। बड़ा लंबा उसका रिकॉर्ड्स होते हैं, कैश रिकॉर्ड्स होते हैं, इधर से उधर मनी ट्रांसफर्स होते हैं। फाइनेंशियल क्राइम है एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग। टेररिज्म एक्टिविटीज को फंड करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, उसलिए टेररिस्ट ग्रुप्स तक क्रिप्टो में पैसा जा रहा है। ट्रांजैक्शन का को वेरीफाई करना और कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, ये कभी कभी रेगुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट्स के लिए। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रैक टेररिस्ट एक्टिविटीज एज वेल। This is reason number 2. Number 3 reason that I listed is obviously tax evasion. A lot of people don't pay taxes according to the earnings that they make, and so governments don't want to lose out on that money. ये भी crime है obviously, financial crime. Number 4 reason that जो मैंने आपको बताया वो है illicit cross border transfer. illegally money अगर क्रॉस बॉर्डर जा रहा है, आ रहा है बिना किसी रीजन के, रैंडम ट्रांजैक्शंस, ये सारे अगेन फाइनेंशियल क्राइम्स के अंडर आता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स ऑब्वियसली कोशिश करती हैं कि कल को किसी तरह के ऐसे इश्यूज ना रहे, फाइनेंशियल क्राइम ना हो, केवाईसीज पूरी रहें, एएमएल पूरा रहे, विच इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जिसे नहीं पता उसको बता रहा हूं। तो जब अगर ये सारी चीजें होने लग जाएं, अगर कायदे से हो रही हैं, तो ये सारे रूल्स को तोड़ना मुश्किल होगा और छुपाना चीजें मुश्किल होगा। So to prevent financial crimes is number one on the reason of why do governments regulate cryptocurrency. Number 2 जो मैंने आपको बताया वो था इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स और यूजर्स जो कि बेसिकली ऐप पे हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए। उनको कैसे, किससे प्रिवेंट करने के लिए? कल को किसी तरह के स्कैम हो रहा है, या कोई एक्सचेंज कल को कोलैप्स कर सकता है, या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में घुस गए हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं जो कि फेक है, उससे बचाने के लिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है कि हमेशा जितने भी आपके ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये थोड़े अकाउंटेबल रहें, ये थोड़े ट्रांसपेरेंट रहें, और कल को इनमें किसी तरह का फ्रॉड हो तो वो फ्रॉड तो खैर चलते रहते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन हो गए हैं, लेकिन वो रिड्यूस हो सके एक हद तक। ये गवर्नमेंट का मेन मोटिव रहता है इन सारे यूजर्स और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स दे रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, राइट। अभी स्पेशली किसके साथ होता है? ये होता है बिगिनर्स के साथ, जो मैं हमेशा उनको हिदायत देता हूँ कि थोड़ा पढ़ें, थोड़ा जानें क्रिप्टो की दुनिया को, ट्रेडिंग करना सीखें, और कभी भी किसी रिसर्च के बिना आप किसी चीज में इन्वेस्ट ना करें, किसी ऐसे कॉइन में या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें जो आपको कल को नुकसान करवाए, राइट। नाउ थर्ड रीजन जो मैंने बताया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। कल को कोई सडन क्रैश आ जाता है मार्केट में और इकोनॉमी हिल जाए, या आपके बैंक्स और इंस्टीट्यूशन एक बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाएं, ये गवर्नमेंट ऑब्वियसली कभी भी नहीं चाहेगा। गवर्नमेंट चाहेगा कि आपकी इकोनॉमी और उनकी इकोनॉमी स्टेबल रहे, बैलेंस रहे, और ऐसे सडन क्रैशेस को ना देखें। तो इसीलिए ये सिस्टमैटिक फाइनेंशियल शॉक से बचने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि
मैं रेगुलेट कर पाऊँ, वही कोशिश करती है, ठीक है। नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट, टैक्स कॉम्प्लायंस इंश्योर करने के लिए। Taxes obviously are a government's main source of income when it comes to earnings. अगर कोई भी सरकार चला रहा है तो वो चाहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सरकार टैक्स कलेक्ट कर पाए। गवर्नमेंट्स इसलिए चाहती हैं कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को वो रेगुलेट करे ताकि वो जान पाए कि कितना नेट लॉस, प्रॉफिट, गेन, लॉस, सारी चीजें हो रही हैं, कितना नहीं हो रहा है, रिपोर्ट मिले उन्हें। थोड़ा टैक्सेशन पॉलिसी के रूल्स बने रहें, क्लियर रहें। और लास्टली वो चाहेगी कि अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो इकोनॉमी की तरफ वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना पैसा वो इकोनॉमी को लाके दे रहा है, उसका क्या फेयर कंट्रीब्यूशन बनता है इकोनॉमी के लिए उसके प्रॉफिट्स में से, ये चाहिए। ये गवर्नमेंट क्यों करती है भाई? बेसिकली गवर्नमेंट बस इसलिए करती है ताकि वो कोई टैक्स पे मिस आउट ना कर ले। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जिस भी तरह से वो टैक्स कमा सके वो कमा ले, और इसलिए वो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को हमेशा मॉनिटर, रेगुलेट और टैक्स करना चाहेगी, राइट। ये था रीजन नंबर 4। फिफ्थ मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, मॉनेटरी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कल को गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि वो हमारे, अगर आप यूएस में हैं तो डॉलर का प्राइस प्रोटेक्टेड रहे, डॉलर का प्राइस हमेशा मैनेज्ड रहे गवर्नमेंट की तरफ से, और फॉरेन एक्सचेंज प्रोटेक्टेड रहे। इंडिया में है तो रुपी का क्या प्राइस है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली चाहेगी कि वो मेंटेन कर पाए, राइट। और दूसरा वो हमेशा ये चाहेंगे गवर्नमेंट्स की उनका जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा टूल है। रिजर्व बैंक के अंडर जितने सारे बैंक्स आते हैं वो प्रोटेक्टेड रहे कि कल अगर, क्योंकि कल अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी फिएट मनी को रिप्लेस कर देता है, ट्रेडिशनल मनी को रिप्लेस कर देता है, तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक टूल, इकोनॉमिक और बहुत बड़ा टूल पॉलिसीज को कंट्रोल करने का उनके हाथ से चला जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑब्वियसली कभी नहीं चाहेगी, और इसलिए वो कोशिश करती है कि मॉनेटरी सोवरेनिटी बनी रहे मार्केट में। तो ये हैं 5 रीजन एज टू व्हाई गवर्नमेंट रेगुलेट्स क्रिप्टो करेंसी, राइट। नाउ आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, वी आर डिस्कसिंग, अभी आई हैव जस्ट काइंड ऑफ wrapped up the topic for the day, that is why do governments regulate cryptocurrency, right? In the last 1.5 hours I have discussed why do governments regulate cryptocurrency. I have listed down 5 points that I will again get to at the end of this live session. मैं एक बार फिर से आपको सम अप करके बताऊंगा लास्टली जब हम इस लाइव सेशन को रैप अप करेंगे। तब तक आप बने रहिएगा अगर आपने जस्ट ज्वाइन करा है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आप लोगों को दे दूं, और क्योंकि उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन करा है और आपने मिस आउट कर लिया है, तो आप जान लो, अगर आप नए डिपॉजिटर हैं तो मेरी तरफ से आपको मिल सकते हैं 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। कैसे मिल सकते हैं नए डिपॉजिटर को, मैं बता देता हूं। अगर आप नए डिपॉजिटर हैं, आपको मिनिमम 3 यूएसडी आपको इन्वेस्ट करना है, डिपॉजिट करना है जीबिट पे। जीबिट पे आप डिपॉजिट करते ही आप अपनी यूजर आईडी मेरे साथ शेयर करें, और आई विल मेक श्योर दैट आपको 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू, जो भी आपको चाहिए, बिल्कुल फ्री मिलेगा। फ्री मतलब फ्री। आप अगर आप नए डिपॉजिटर हैं तो आप ये इंफॉर्मेशन सुनना बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नए डिपॉजिटर हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव डिपॉजिटेड एंड मेक मोस्ट ऑफ द ऑफर जो मैं आपको अभी अभी बता रहा हूं। If you are a new investor, new depositor, new user on Zbit, don't miss out on this giveaway offer. Offer is
that if you deposit a minimum of just 3 USD, just 3 USD, you will get 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe, one of them from my side, absolutely free. Absolutely free, right? Now, meanwhile, we have been discussing the topic for the day, which is again a very interesting topic. It is how do and why do banks, why do governments regulate cryptocurrency, right? I have discussed it in quite a lot of detail. I have discussed 5 pointers, which I will be coming back to again in the next few minutes and before I wrap up my session for the day, right? Meanwhile, I will take a small and short break. When I come back, I will look at what is latest when it comes to the news regarding cryptocurrency and cryptocurrency platforms in the world right now, right? हम देखेंगे कि मार्केट को क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं और क्या क्या न्यूज है मार्केट में जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को इफेक्ट कर सकती हैं, राइट? आप meanwhile you can have a look at the market which is right there in front of you and you can look at which coin you can invest on. I will show you this is how BTC is doing. अभी तो 95,000 पे भी चला गया था, अभी हाल ही में थोड़ा सा नीचे आया है लास्ट कुछ मिनट में. इथीरियम मीनवाइल इज एट 3326. इथीरियम में भी थोड़ा उछाल आया है लास्ट के कुछ डेज में. एंड ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि ये उतार, ये चढ़ाव जो है, ये राइज जो है, प्राइस हाई जो गया है, ये क्यों गया है, ठीक है? ये मार्केट प्राइस का ऊपर जाने का रीजन मैं आपको बताऊंगा व्हेन आई कम बैक फ्रॉम माय शॉर्ट ब्रेक. आई विल डिस्कस व्हाई दिस मार्केट हैज क्लाइंब्ड इन द लास्ट फ्यू डेज. ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट ने एक राइज देखा है. मेरी आदत है कि मैं हर रोज जब भी लाइव पे आता हूं, मैं एक बार आपसे जो भी, जिसे कहते हैं ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर क्रिप्टो की दुनिया में जो भी होती है, मैं हमेशा डिस्कस करता हूं आपसे. और आपसे कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपको बताऊं कि ऐसी क्या न्यूज है जो इफेक्ट करेगी मार्केट को या किसी एक पर्टिकुलर टोकन का प्राइस या ओवरऑल मार्केट को या आपके इन्वेस्ट करने के डिसीजन को. और इस साल आपका कैसा रह सकता है. 2026 जो ईयर है, मैंने लास्ट सेशन में, लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि ये साल क्या प्रिडिक्शंस हैं. स्टेबल कॉइन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि स्टेबल कॉइन्स की मार्केट किस तरह से 500 बिलियन के भी ऊपर जाने वाली है, $500 बिलियन के ऊपर जाने वाली है. मेरे को याद है मैंने डिस्कस करा था. और मेरा हर बार ये रहता है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करके जाऊं जो आपकी नॉलेज इनहैंस ही ना करे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी एक नॉच ऊपर लेके जाए, ताकि आप इन्वेस्ट करें तो एक बेहतर नज़रिए के साथ करें. आपकी मतलब एक थोड़ी न्यूज़ आपको पता रहेगी तो आप फाइनेंशियल डिसीजन बेटर ले पाएंगे. आप इन्वेस्ट करने से पहले आपको जानकारी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दैट इज़ हाउ यू गेन नॉलेज. ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से तो नॉलेज आप गेन करते ही हैं, लेकिन जितनी नॉलेज न्यूज़ से मिलती है क्रिप्टो के बारे में और वो कैसे मार्केट को इफेक्ट करती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो ईटीएच का प्राइस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, आपके ऐप स्क्रीन पे है, और इट हैज़ रिजन ऑब्वियसली. एक्सआर प्री का मैं एक बार प्राइस देखना चाहूँगा. इट इज़ अगेन 2.1446. इसमें हल्का सा मैं कहूँगा जी चढ़ाव आया है, ज़्यादा नहीं आया है रिपल में. वन डे पीरियड अगर आप देखें तो 2.26% तक बढ़ा है. 1 वीक पीरियड अगर आप देखेंगे तो अगेन इट हैज़ ग्रोन 2.27, बट ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज़ डूइंग. एक बार आप सोलाना भी देख सकते हैं. ऑल ऑफ यू सोलाना इन्वेस्टर्स,
काफ़ी लोग अटैच रहते हैं सोलाना के प्राइस चार्ट से. This is how Solana is doing. It's at 144, and right, this is how the market is for Solana 144. ADA yani Cardano is at 0.4218 USDT. Not much change when it comes to Cardano. Pump is at 0.002796, and Doge, one of the most popular crypto meme coins, 0.14794 पे है. Right. Now, with that, I am going to be taking a short break. When I come back, I will be discussing the latest news when it comes to the world of cryptocurrency, what all the market is doing, and how this change has come about in today's crypto market in the last few days. There has been some kind of news that has been circulating, और उस न्यूज़ की वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है मार्केट में. I will discuss that in the next few minutes. I will be back, and then we will be going to a newer topic, uh, when it comes to government's role, when it comes to क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स, और कैसे रेगुलेट तो करती हैं, क्या वो और चीज़ें कर सकती हैं, क्या वो नहीं कर सकती हैं, किस तरह से ये हम जैसे ट्रेडर्स को अफेक्ट करता है, हम जैसे लोगों को, कंज्यूमर्स को और इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करता है, किस तरह से आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं, वो भी हम देखेंगे आज. और ऑब्वियसली वो हम देखेंगे, बट ओनली आफ्टर जो हम न्यू स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में. राइट. आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप डिपॉजिटिंग ऑन जीबेट. एक ऑफर भी है जो मैं आपको बता चुका हूं. अगर आप नए डिपॉजिटर हैं तो मैं आपको दे रहा हूं 20,000 पेपे, या तो फिर 20,000 शीबा इनू बिल्कुल फ्री. नए इन्वेस्टर्स के लिए है ये न्यूज खाली. नए इन्वेस्टर्स, न्यू डिपॉजिटर्स, प्लीज कीप योर ईयर्स ओपन. आई एम मेकिंग एन अनाउंसमेंट right now, and I am telling you that I am giving you 20,000 pepe or 20,000 shiba inu absolutely free of cost. Absolutely free of cost. Just let me know your user IDs, and I will deposit 20,000 US, 20,000 pepe or 20,000 shiba inu, whichever you like, for free. All you have to do is deposit just 3 USDT, minimum of 3 USDT. I don't think that is a very big amount. खाली 3 USDT आपको डिपॉजिट करना है, और आपको मिलेंगे मेरी तरफ से 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू बिल्कुल फ्री. आपको बस क्या करना है, आपको खाली बस $3 यूएसडी डिपॉजिट करने हैं. मिनिमम बता रहा हूं, नए नए डिपॉजिटर्स के लिए ये है. $3 आपको डिपॉजिट करने हैं, 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे बिल्कुल फ्री. On that note, I will be taking a short break. I will be back in the next few minutes. Till then, stay tuned, have a look at the market, and it is obviously fluctuating, but you can have a look at it. I will be back in the next few minutes. Till then, stay tuned.
Welcome back to the live stream. To all of you who are tuned in on Zbit app as well as on YouTube's live streaming, the topic for the day has been how do governments regulate cryptocurrency and why do governments regulate cryptocurrency in the first place, right? Uh, I discussed five pointers in quite a lot of detail. Uh, and I listed them one by one. If you have just joined in, I will obviously get back to the topic again in the last few minutes of my live session. But meanwhile, my first priority is to look at all the news from the world of cryptocurrency, right? If you've just joined in, I will be looking at all the news in the world of cryptocurrency. That will be my first priority now, because since you are here and I am helping you out with my sharing some kind of insights and knowledge that I have. I'm not an expert, but I obviously look to help you out and enhance your knowledge when it comes to the world of cryptocurrency so that you can make better financial decisions on our platform, that is Zbit, and then make decisions about investing and trading, buying or selling accordingly, right? So therefore, I will be looking at the latest when it comes to the world of cryptocurrency, what all is happening, and what all news will affect you as a trader, right? Let me begin with the first news. There is some. Right. I will be looking at this one. This news will be on my hit list, if you can say that. I will be looking at this news and how this news does affect you in a lot of ways, right? Again, Dogecoin related news is there as well. XRP's news is there as well. Bitcoin again is showing really optimistic signs as well, right? So there's plenty of things that need to be discussed one by one. I will get to the less important news first, then we'll get to the even bigger, more important news and news that will influence all kinds of markets, right? Binance Wallet unlocks in app leverage crypto futures trading with Aster team up. What? Binance Wallet unveiled a feature allowing users to trade leveraged crypto futures bet directly while avoiding the risk of holding coins on a centralized exchange such as Binance, itself the industry's largest by volume traded. Following an agreement with Aster, the second largest decentralized perpetual platforms, users are able to trade directly through the wallet while retaining complete control of their coins, Binance said on Wednesday. The move reflects growing user demand for blending the speed of centralized finance with the control of decentralized finance. Users want seamless trading without the risks of holding on exchanges, a danger highlighted by the collapse of former centralized perpetuals trading giant FTX in 2022. I'm sure all of you must have heard about the collapse of FTX, which was again a trading platform, trading exchange platform. It happened in 2022. There was a huge scam involved there, and so Binance has now teamed up with Aster to allow crypto futures trading as well, leverage crypto futures trading, right? So that is the news, that is the latest news when it comes to CoinDesk. That is something that we've just looked at now. Visa teams up with BVNK.
to launch stable coin payouts. Visa is integrating stablecoin infrastructure from BVNK to its Visa Direct platform, expanding how its 1.7 trillion real time payments network can move money globally. The partnership announced Wednesday allows businesses in select markets to pre-fund payments in stable coins and send payouts directly to recipients' digital wallets. Visa's direct network is widely used by businesses and platforms to send payments to individuals, think payroll, gig economy wages, or cross-border remittances by using stable coins, which are designed to maintain a fixed value and settle instantly. Visa aims to offer faster access to funds, especially outside of banking hours. Will provide the infrastructure to move and settle these. BVNK will, I think this BVNK is a Dutch, I will just reassure. All right. The UK based firm, okay, it's a UK based firm. I thought it's a Dutch based firm. It's not. The UK based firm already processes over $30 billion in stablecoin payments each year. So that is the news, short and crisp, that Visa has teamed up with BVNK to launch stablecoin payout. Now, the third news. Spanish bank Bank Inter joins BBVA and Tether with stake in crypto exchange Bit2Me. Spanish banking giant Bank Inter has taken a minority stake in crypto exchange Bit2Me, joining a 30 million euros or $33 million funding round involving Tether in August 2025. The investment adds another traditional bank to Bitumi's growing list of backers, which already includes major local financial institutions including BBVA, Unicaja, and Cesa Bank. Bitumi, headquartered in Madrid, is among the first firms registered under EU's crypto assets regulation, allowing to operate across the entire European bloc. The company has positioned itself as a business-to-business gateway for banks seeking compliant access to crypto markets. Right. If you've just joined in, we are looking at the latest news when it comes to the world of cryptocurrency. Uh, and yeah, one of the most biggest news right now in the world of cryptocurrency is that of Bitcoin, US spot Bitcoin ETFs pull in $750 million in strongest day since October. This is obviously January 2026 that we are looking at. But US spot Bitcoin exchange traded funds recorded their largest daily inflows in 3 months on Tuesday, signaling a return of institutional demand as investors rotated back into risk assets following year end portfolio rebalancing. Data from Soso Values shows spot Bitcoin ETFs logged $753.7 million in net inflows, the strongest single day total since October 7th. Fidelity's FBTC led inflows with $351 million, followed by 159 million into Bitwise, Bitb, and 126 million into BlackRock's IBIT. The pickup inflows suggest institutional investors are re-entering the market after a subdued end to 2025 when tax-related selling and risk-off positioning weighed on allocations to crypto-linked products.
Crypto prices rose alongside the inflows. Bitcoin gained about 3% over the past 24 hours to trade near 94,600. It is currently at 95. It has risen even more. If you can see your screen, right? This, if you can see this, it has risen even more. Bitcoin gained about 3% to trade near 94,600. It is currently past 95,000 dollars, while Ether climbed to more than 6% to around 33.20. Let's look at Ether as well. Ether is at 33.29, so it's somewhere around this price itself, but it has climbed 6%. For all of you traders and investors who have just joined, we are looking at how much these coins have risen in the last one day, right? One day, 24 hours, right? Outperforming as demand broadened beyond Bitcoin. Now, that is big news. Dogecoin as well. Dogecoin jumps nearly 9% as buyers push price out of recent downtrend. Dogecoin rallied nearly 9% to around $0.14 as buyers forced a break out of a weeks long downtrend with heavy intraday volume and renewed speculative interest lifting the meme token even as broader crypto markets remain mixed. Dogecoin's move comes amid a broader resurgence in meme coin trading at the start of the year, with traders rotating into high beta tokens as Bitcoin remains range bound and liquidity conditions stay uneven after the holidays. Dogecoin and Pepe led the latest leg higher, rising roughly 11 and 17% respectively in a single session. Pepe has risen 17%, while CoinGecko's GMCI meme index climbed to a market value of $33.8 billion dollars with nearly $5.9 billion dollars in 24-hour trading volume, a sign that rally is not confined to a single token. Now, it has risen 17% Pepe in the last single session. I will look at Pepe. Pepe is also one of the coins जो हम ऑफर कर रहे हैं आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट 20,000 पेपे हम आपको दे रहे हैं, राइट. See the change here. Look at this. And if you are a new user who has just joined in on this chat, I am giving you 20,000 Pepe for free. If you don't want Pepe, I am giving you 20,000 Shiba Inu as well for free. All you have to do is deposit just a minimum of 3 USD on Zbit and let me know your user ID. I will transfer it to your account. I will let my team know, and we will be giving you 20,000 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu, whichever you like. Whichever you like. You've seen Pepe has grown 17% in the last session, right? You can read here. Now, just need to have a look at XRP as well. Ripple, again, a very popular coin among other coins apart from Ethereum and Bitcoin. It shows XRP at 2.1580 according to this news. But we will look at where it is right now. It is at 2.15. It's very similar to what it was in this chart, but XRP jumped to $2.17 after buyers finally pushed through the 2.14 resistance zone with a sharp pickup in volume, suggesting real demand rather than a thin holiday driven move. What is the background behind this news?
The move comes as XRP continues to attract attention early in 2026 following a stretch of steady institutional engagement. Spot XRP exchange traded funds have maintained consistent inflows in recent weeks, while exchange balances remain near multi year lows, a setup that can amplify price moves when demand increases. Market commentary has also turned more constructive. Several analysts have pointed to XRP's improving structure relative to Bitcoin after months of consolidation, while others caution that the token is still trading below longer term resistance levels that capped rallies throughout 2025. The broader crypto market has been mixed with Bitcoin and Ether struggling to extend gains against that backdrop. XRP's ability to attract focused buying has stood out, even as traders remain selective across large cap tokens. XRP rallied from $2.05 to 2.17 over the 24-hour period ending Jan 14. Hmm. Breaking decisively above the 2.14 level that had capped multiple upside attempts. The breakout was accompanied by a surge in trading volume with 167.9 million XRP changing hands at the peak, roughly 189% above the 24-hour average. Price action showed a clear bullish structure. XRP posted consecutive higher lows from $2.05 through 2.12 before accelerating into the breakout, signaling buyers were stepping in earlier on each pullback. The move also marked a clean break move above a descending trend line that had limited upside momentum and since late December. Now, all of you people who are invested on XRP, this goes out for all of you. Just keep a track of how XRP is progressing. It is a coin that has plenty of optimism attached to it. When it comes to the investors in the market, and you should definitely look at investing with trading, whether it is buying or selling, whichever you feel like is the direction that it will be moving towards. But it has shown some kind of a breakout here, but let's see how it performs in the coming days. Right, this has been published 4 hours back, and again it is very big. It is about the top major cryptocurrencies in the world. Bitcoin surges above $95,000 as Ether, Solana, Cardano jump 8% on optimism. इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म ही सब कुछ रहता है भाई आजकल। और जब वो कह रहा है जो वो उसके हिसाब से अ, आप देख ही सकते हैं मार्केट किस हिसाब से बढ़ा है। Look at how Bitcoin is doing. Crypto markets ripped higher on Wednesday as easing US inflation and renewed political uncertainty around the Federal Reserve reignited demand for scarce non sovereign assets. Bitcoin jumped more than 4% over the past 24 hours, breaking above $95,000 for the first time in a week and pushing towards the upper end of its January range. Ether outperformed, climbing over 7% to around $3,330, while major tokens such as Solana, Sol, Cardano, Sada, XRP, and BNB's chain BNB moved as much as 9%. So plenty of movement in the crypto market this last 24 to 48 hours. But the move has come as US inflation data surprised to the downside, reinforcing expectations that the Federal Reserve will continue cutting rates this year. Lower inflation eased pressure on bond yields and improved liquidity conditions, a setup that has historically favored crypto and other risk assets. Political tension added fuel. Reports that the US Justice Department had served grand jury subpoenas on the Federal Reserve earlier this week unsettled markets and weakened the dollar, boosting the appeal of assets viewed as insulated from central banks' risk.
Bitcoin is now approaching levels that previously triggered heavy selling, and derivatives data shows leverage is quickly rebuilding. It means the market could see increased volatility. I will also look at the comments that you are making. Meanwhile, I welcome you all to the live stream. Today we are discussing. I mean, the topic for the day has been, why do governments regulate cryptocurrency? But since we've done that topic, we have discussed it in quite a lot of detail. If you've just joined, I discussed 5 pointers as to what are the reasons behind governments regulating cryptocurrency. However, once we were done and I went to the in-depth analysis of that topic, I switched to what all is happening in the world of cryptocurrency. What is the latest news when it comes to the world of cryptocurrency? And I discussed and I looked at all these news that you can see on my screen, on your screen as well. Uh, Relating to how there has been a massive movement in the cryptocurrency market when it comes to Bitcoin or Ethereum or Solana or XRP. All these coins have seen some kind of a change. The market has jumped. Even Dogecoin, a popular meme coin, has jumped nearly as 9%, and the buyers have pushed the price out of the recent downtrend that it was going through. We discussed how XRP has surged as well. It has gone past its 2.15 mark, since it was there since a long time. Bitcoin, most importantly, has gone above 95,000. I think it has come down in the last few minutes or so. No, it has again gone past. It's such a volatile market. Uh, while I have been on this live session, it has gone past 95,000. When I joined in, when I started this live session, it was at 94 something. It has gone past 95 now, and it might well go down again or go up higher again. That is for you all to look at and predict and then make decisions. XRP as well, it has gone past 2.15. It is currently, I think, at 2.17 USDT. It is at 2.15. It's come back again at 2.15, and it's gone even below now. It's fluctuating, obviously. We will see what the situation is by the end of our live session, right? So we looked at all these latest news in the market, and I am looking to also answer all your doubt when it comes to the topic for the day, which is, why do governments regulate cryptocurrency? What is the reason behind it, right? I am live on both the platforms, on Zbit app as well as on the YouTube live streaming as well. I will also discuss the news in relation to
the Senate and what it has announced in the bill related to crypto. It is obviously one of the biggest news that is there in the crypto market right now. What all US senators have taken decisions upon when it comes to status of all these crypto tokens, right? I hope that you can share my screen. Mm, 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 mm. One second. Right. So the U.S. senators have, announced or unveiled a draft legislation that has created a regulatory framework for cryptocurrency, which obviously, if it gets signed into a law, would clarify, financial regulators' jurisdiction over the sector, and it would potentially be a very good, it would give the entire crypto sector, all these digital asset sector, a huge boom, a huge boost if it does get converted into a law. And the crypto industry has long pushed for such legislation, often arguing it is existential to the future of the digital assets in the US and necessary to fix core long-standing problems for crypto companies. Right? It talks about securities, commodities, and some kind of legal clarity when it comes to all these things. The bill could Monday's bill, which could change. This is very important. Monday's bill, which could this is more important from the point of people who are living in the US and are invested into the platform. Monday's bill, which could change as senators consider amendments, prohibits crypto companies from paying interest to consumers solely for holding a stable coin. However, it allows crypto companies to pay rewards or incentives to customers for certain activities, such as sending a payment or participating in a loyalty program. Right. This was in relation to the news. New Senate Banking Committee draft legislation was established regulatory parity between XRP, Solana, Dogecoin, and Bitcoin by creating non-ancillary asset classifications. Tokens included in exchange traded products by Jan 1, 2026 would gain exemption from securities regulations. Current ETP listings encompass Litecoin, Hedera, Dogecoin, and Chainlink alongside XRP and Solana. Under the proposed criteria, these tokens would obtain regulatory treatment matching Bitcoin and Ethereum when the legislation becomes effective. तो ये सारे जितने भी कॉइन्स हैं, लाइट कॉइन, हेडेरा, डॉज कॉइन, चेन लिंक, एक्सआरपी और सोलाना सहित, इनको सेम ट्रीटमेंट, रेगुलेटरी ट्रीटमेंट मिलेगा when it comes to all these coins, Bitcoin and Ethereum के बराबर, when the legislation becomes effective, right?
it will be interesting to see when this legislation becomes effective, uh, and how it will bring a major shift in the world of cryptocurrencies, because uh, when it comes to the US, it is obviously the leader when it comes to changes in the markets, when it comes to major changes in the world in terms of any market for that matter, whether it is stock markets or how the US market behaves, obviously influences how other markets in the world behave, right? So, and all these crypto platforms are going to keep an eye on whether and when this becomes a law, and senators have obviously come out with their own uh, you know ideas, and there will be obviously amendments when it comes to this, but we'll have to wait and see until it becomes a law, and when it becomes a law, right? Now, there is another comment that has come from one of Scott CR7, says, which country are you from? uh, can you guess which country I am from? I don't think that's very difficult to guess. uh, I would like you to first guess which country I am from, and I would like you to uh, take a guess and figure out, right? क्या आप बता सकते हैं मैं किस कंट्री से हूँ? Africa. Africa isn't a country, Scott. Africa is a continent. Africa is a continent. Which country am I from? Can you guess that? Yeah, yeah. No, you don't have to be sorry. That's okay. I welcome all of you who are joined in. I think you're Indian. So, I mean, I want you to take a firm guess on where I am from. I want you to take a firm guess on where I am from, and, don't just take wild guesses. Just take a firm guess, and I will obviously reveal it in the next few seconds if you don't take a wild guess, and a firm one and a sure one. Right? Come on, squat. Go ahead and take a wild guess. Which country am I from? You think I'm Indian? 100% sure? India, brother. 100% sure? So you're right. You're right. And I would love to know where you are streaming from on the Zbet app as well, Scott. Scott CR7. I would love to know where you are from, and which country do you originate from. It's really interesting to have all these conversations with you all. It just makes me feel that people are listening to my conversations, and it's not just a one way conversation. uh, I would love to hear where you're from. Scott CR7, I am waiting for your answer. Which country are you from? Oh, you're also from India. Oh, nice to see. Which city are you from? Right. Bangalore. Oh, very nice. You're from Karnataka. So it's nice to have people from India as well who are streamed in on the live stream. It's nice to hear that someone from Bangalore is here, and is liking our conversations and engaging with me on the Zbit live stream app as well, right? Uh, the topic for the day has been, meanwhile, why do governments regulate cryptocurrency, right? That was the topic for the day. And it's interesting to see all of you people have joined in. I will, which state are you from? I am from Delhi, right?
or you can say, I live very near to UP, Uttar Pradesh, right? And right, so my topic for the day today was, why do cryptocurrencies uh, get regulated or monitored by the governments, right? I discussed that in a lot of detail, but I will again go through it one by one. Again, there were 5 pointers. I will go through it, and I will do that because a lot of new people have joined in and they don't know as to why governments do regulate cryptocurrencies. Cryptocurrency क्यों regulate करते हैं, right? So I will just have a small recap of it so that you can have a fair idea of what we discussed and you don't miss out on anything that was said during this live stream session on Zbit and on YouTube. And there were very practical, economical, and security reasons as to why do governments regulate cryptocurrency in the first place, right? So the number one reason that was very first on my list was to prevent financial crimes such as money laundering, financial crimes such as illicit money transfers from one country to another, cross borders, financial crimes such as tax evasion, or financial crimes such as, the biggest and the most scariest of them all, when it comes to thinking from the government's point of view, is these terrorism activities that get funded by cryptocurrency. uh, and so government looks to regulate them in whichever way they can, right? So the way they use to regulate these activities and prevent these you know financial crimes is that regulations help KYCs, through KYCs or through AML, anti-money laundering rules, so that illegal activities are harder to find. Scott CR7 has another question. Will crypto be seen as an currency in future for transactions? 100%, my brother. 100%. That is just the way the market is shaping up to be. I was just looking at the news a few minutes back, and we were reading about how there has been such a the market has seen such a jump in investor optimism when it comes to all these coins, right? Whether it is Bitcoin, Ether, Solana, Cardano. So I mean, I just went through all of this. I don't think I'll go through it again, but I'll just sum it up for you because uh, it's very evident how the market is progressing, and it's very evident. We also just read about what the legislations and the bills are being passed in the US Senate as well, how they are looking to have some kind of you know uh, a plan, some rules to abide by, and some kind of decisions are being taken when it comes to cryptocurrencies and how they will be used. There is a proper format that they are looking to adopt, and when that bill becomes a law, obviously it will bring in massive changes. When anything happens in the US market, it is bound to show its effect in the world market as well, right? So uh, with keeping our by keeping our fingers crossed, my fingers crossed, I can certainly say that the market looks very bright when it comes to cryptocurrency and how it will become something major, like you've just asked, as a currency in future for transactions. 100%. If I would have to put my money on it, I would 100% do that, because it looks like it is very much the future by how things stand and how things are shaping out to be, right? So that is the sign of things to come, and all the moves that are being made by governments and by all these trading platforms look like they are heading in that very direction. So my answer to you is 100% yes, right? Now I welcome more users to the live stream. I hope
If you've just joined in, I'm just letting you know that there is a new depositor offer that is going on for all of you. Now, just listen to this very carefully. I'm making an announcement. I hope that it will help you and it will help you start as a beginner if you are doing it on Zbit. I am giving you 20,000 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost, right? I'm giving you 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost, but only if you make a minimum. And I'm not asking for much, I am just asking you to make a minimum 3 USD deposit on Zbit. That's all I'm asking you to do, right? 3 USD आप इन्वेस्ट कीजिए और आपको 20,000 USD, आपको 20,000 पेपे और 20,000 शिबा इनू मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा, क्योंकि आप पहले इन्वेस्टर हैं। हम चाहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपकी शुरुआत थोड़ी बढ़िया हो, धमाकेदार हो, आपको थोड़ा एक बूस्ट मिले और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए प्लेटफॉर्म पे। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू इन्वेस्ट on Zbit, you have to deposit on Zbit, and that is also not a very big amount. I'm just asking you to deposit just 3 USD। खाली $3 से आप अपना Zbit पे जर्नी शुरू कर सकते हैं, राइट? Scott has another question here. Scott CR7, which cryptocurrency would be the best to invest in right now and likely to be used as an currency? Uh, that I would say very much is Bitcoin. I will obviously get to the root of your answer. Let me just announce this offer once more for people who have just joined in. जिन लोगों ने अभी अभी join करा है, I'm just letting you know that I am giving you 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost as soon as you join on Zbit and deposit at least 3 USD, right? And I will look to do that ASAP. You will have to just let me know your user ID once you deposit $3, right? And if you're a first time, this is only for first time investors, right? New depositors, right? I hope इस गिव अवे का आप पूरा फायदा उठाएं और आप एक धमाकेदार स्टार्ट करें Zbit पे एज अ प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म, राइट? I will answer your question, Scott. Give me just a minute. I will look to answer that in the best of with the best of my ability. I will answer your question, Scott. Don't worry. I will be answering your question. You don't need to, leave the chat. Just stay tuned in. And Scott, I would also like to tell you that if you're a new depositor, newbie or a beginner on Zbit, I am giving you 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu. One of them absolutely free of cost. All you have to do is just deposit 3 USD on Zbit, and you will get the 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu in your portfolio, right? I welcome more and more users who are joining in on Zbit. I welcome you to the chat. I hope that you are liking our conversations. The topic for the day has been, why do governments regulate cryptocurrency, right? That is the topic for the day. Now, give me a minute. I will be answering Scott's question. But meanwhile, I was just going through all the pointers before. I will also get back to the pointers regarding why do governments regulate cryptocurrency. That has been the topic for the day. I don't want to stray away from that again and again, because more and more people are joining in and I want them to have some kind of an understanding of क्यों गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करती है। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस में कर चुका हूँ। 5-7 रीजंस हैं जो मैंने बताए हैं।
वो मैं आपको एक बार बता दूंगा दोबारा. आई एम जस्ट लुकिंग टू आंसर स्कॉट्स क्वेश्चन फर्स्ट. Scott's question is that which is the best cryptocurrency that I should invest in right now, right, and which is likely to be used as a cryptocurrency in the future. Right. I think all of you who are joining on the Zbit platform will agree to me with my answer to Scott that Bitcoin is the currency that you should invest on at the moment. It is absolutely going to be, I think, the number one cryptocurrency that will be seen in the future as a medium of, money, right? As a medium of, money, that is crypto money, right? And this is not just based on you know if you ask me that which is the best, and I'm just singling out Bitcoin because it is my favorite. No, no, that is not the case. I am telling you this on based on the influence, the power of Bitcoin in the world today. Yes, this app is 100% regulated. You can have a look at Zbit's page. You can have a look at the website as well. We are completely safe, transparent, and regulated by the you know official bodies that are regulating the crypto markets, crypto platforms, exchange platforms, right? And so you can have a look at that. I love that you have so many questions, Scott, and I'm looking to answer them one by one. uh, and I welcome another user to this live stream now who has just joined in after this question in by Scott. Your questions probably seem to have no end. What's my role in this company? I am an anchor here. I am working as, you know, I am here to tell you about offers. I am here to tell you about cryptocurrency markets. And I am here to enhance your knowledge when it comes to the world of cryptocurrency. Uh, Now, so the main and the first and the best crypto coin that you can invest in is obviously Bitcoin. It is obviously the largest. It is obviously one of the most influential, most powerful crypto coin that is there in the world right now, and it is pretty dominant in the market. It has an effect on its price rise or price fall has an effect on other coins in the market as well, right? And the most important part is that it is seen as a store of value. It is seen as digital gold, right? You might have physical gold in your lockers, in your banks, but if you do possess Bitcoin, it is digital gold. It is as similar to gold as anything else, right, in the world today. Now, it obviously attracts a lot of investors. It attracts a lot of optimism from these investors, and it is risen in leaps and bounds over the years to become what it is today, right? बिटकॉइन आज जो है वो पहले ऐसे नहीं था, और इवेंचुअली ग्रो करते करते आज वो इस मुकाम पे पहुंचा. इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट $95,000. And right, so this is what but hasn't it also seen a bubble effect in the past year? That's a very good question. It has, or it might have seen a bubble effect, but again, what from what I see right now and what data I have right in front of me, you can obviously see how it is performing and what kind of in optimism there is when it comes to the minds of investors in how it has grown over the years and what kind of expectations people have in the coming year itself, right? In the year 2026, there is plenty of high hope from all these investors as to what Bitcoin might do. It might just go past, it is very close to going past 1 lakh dollars as well, right?
that the signs are there, and I speak from data. I see that in the coming year there are very high chances that it will grow immensely, because the data shows that, right? And there are expectations, and the confidence that investors and traders are showing in uh, Bitcoin is, uh, it just speaks for itself, right? I hope that it answers your question. It might have seen a bubble effect, a lot of things. Even AI is, there are conversations around AI that it will see bubble effect or the bubble burst, or there are bubble effects when it comes to prices of silver as well, right? But you speak from what the data shows, what the analysis shows, was what the trends show, right? Now, coming back to our topic, we were discussing what are the reasons as to why governments regulate cryptocurrency. And I told you that the number one reason was to prevent financial crimes. The number two reason that we discussed today was to prevent users such as, who are there on any crypto platform, to prevent these consumers, prevent traders, investors, so that आप जैसे लोग गलती से किसी स्कैम में ना फंस जाएं, आप किसी ऐसे फेक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कर दें, या कल को आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं और वो क्रैश कर जाता है, तो आपको गवर्नमेंट बचा पाए, और एक्सचेंज कोलैप्स हो जाता है, या कोई फ्रॉड हो रहे हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, थोड़ा अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, it is important that governments actually regulate cryptocurrency, right? Now, the third reason is that to maintain financial stability. कल को ऐसा ना हो कि कोई सडन क्रैश हो जाए मार्केट में, इकोनॉमी हिल जाए, या बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम पूरा एक्सपोज हो जाए रिस्क के प्रति। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा मेजर शॉक मार्केट में ना आ जाए और स्टेबिलिटी भंग हो जाए, ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट the government regulates it to maintain financial stability, right? Now, number four, the most important of them all, कि टैक्स, जितने भी टैक्स कॉम्प्लायंस की चीजें हैं उनको इंश्योर करने के लिए, थोड़ा टैक्सेशन के लिए रूल्स क्लैरिटी के साथ रहें क्रिप्टो की दुनिया में, ये गवर्नमेंट चाहती है। आपके जितने नेट लॉसेस, नेट गेन्स, और जितने भी इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचे, ये गवर्नमेंट चाहती है। और इवेंचुअली गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग एनी प्रॉफिट, द गवर्नमेंट वांट्स अ शेयर ऑफ इट। द गवर्नमेंट वांट्स दैट यू शुड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी इफ यू हैव मेड प्रॉफिट्स, राइट? दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स। अगर ये नहीं होता है तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ये टैक्स जो है वो इवेड करा जा रहा है या लीक हो रहा है, राइट? The government doesn't want any tax to be leaked. They want all of it because it is one of the biggest source of the government's collecting tax money. They obviously don't want that money to be lost, right? So this is reason number four. And then fifth and final reason is that they want to control monetary sovereignty, right? If you're in the US government, you obviously want the price of the dollar to be protected, stay stable, and obviously grow, and be maintained as per the government, right? Also, the government wants the central banking system, no matter which country they are in, to be maintained. And in the future, if time comes wherein crypto money has taken over fiat money or traditional money, then the government will lose out on a huge economical control tool and policy control tool, uh, जो वो इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये मॉनेटरी सोवरेनिटी जो जिसे कहते हैं वो बनी रहे। वो बने रहने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे कीप their national currency and their central banking system intact and protected, right? That is what they want. So these were the 5 reasons as to why government wants to regulate cryptocurrency, right? This was the main topic for the day.
Now, इसके बाद I also discussed a few latest news in the market when it comes to the world of cryptocurrency. हमने देखा कि किस तरह से मार्केट में अभी एक राइज आया है लास्ट फ्यू डेज में, लास्ट 2 डेज में मैं कहूँगा, और मार्केट ने कैसे राइज देखा है, वेदर इट इज एनी क्रिप्टो कॉइन, बीटीसी हो गया, ईथ ईथ हो गया, सोलाना, कार्डानो, सबने राइज देखा है। किसी ने 7% का, किसी ने 8% का, और बहुत मेजर इन्फ्लो हुआ है मार्केट के अंदर, ये भी हमने देखा। तो ये सारे टॉपिक्स अभी तक हमने डिस्कस करे हैं। ऑन दैट नोट आई विल बी टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक। व्हेन आई कम बैक आई विल अनाउंस अनदर ऑफर फॉर यू, जो मैं अभी तक बहुत देर से मैं आपको बता रहा था। आई विल reiterate that same offer, which is for new investors. I will look at it again. I will look to gather your confidence and try and make you invest on Zbit so that you can gain 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost. कैसे मिलेंगे आपको, मैं आपको आके अभी बताऊंगा। और एक नए टॉपिक के साथ मैं वापसी करूंगा। I'll take a short break and I will be back in the next few minutes. Stay tuned on the Zbit live stream and stay tuned on YouTube live streaming if you're streaming from there. All right. I will be back in the next few minutes. Till then, stay tuned.
Welcome back to the live stream, people. I welcome all of you back who are tuned in on Zbet as well as on the YouTube live stream session as well. Right? I am talking about the topic for the day that has been why do governments regulate cryptocurrency, and I've discussed 5 pointers. And to sum it up now, I will just you know say that governments are playing their own part, right, when it comes to cryptocurrency, whether it is about reducing risks for the investors or traders or users, consumers basically, or protecting them, or whether it is about stay keeping the economy stabilized, or whether it is about collecting taxes, or whether it is about just cryptocurrency being a safe platform for people around all around their country, right? The government is playing their own part, but the real debate isn't that there should be regulation or there should be more freedom. That is not the debate. The exact debate that we should be talking about, whether uh, uh, the exact debate that we should be talking about is about smart regulation or chaos, right? That is the debate that we should be having in between ourselves, because ultimately there will be some kind of regulation that will always be there when it comes to the government, right? They would always want to make most of whatever taxes they can get, or whatever however they can get to know the data or the profits that we are making, or these crypto platforms are making. And mostly it is about smart regulation and chaos. So therein I would like to sum this thing up. Now, I will also look at now a few countries, right? uh, and how their countries and the governments allow crypto with clear rules, licensing, and right. Now, among these countries is obviously the first one, which is United States, wherein crypto is legal. US has crypto that is legal. The crypto markets are legal. You can invest in them. You can make your selling and do buying and do trading, all sorts of things you are very much entitled to do. You are free to do that. You have your own your rights, and you can completely trade crypto, right? Now, but what happens is that these exchanges in the US must follow either the AML that I did talk about in the last few minutes, which is anti money laundering, or KYC in a very strict manner, right? It is very important that these things are followed in the US. This is particularly the US that I'm talking about. Now, crypto is also treated as property for tax, and it is regulated by multiple bodies, right? The SEC, the CFTC, the IRS. And so, while all these crypto, there are scams as well going on, and all these things are happening, it's important to note here in context of the US that rules are slightly complex, but investors are also very protected, right? So this is what the US has done. I did show you that अभी हाल ही में एक क्रिप्टो बिल भी पास होने वाला है, जो मैं जिसके बारे में मैंने भी बताया है, क्रिप्टो बिल जो कि लॉ बन जाएगा फिर इवेंचुअली, और उसके बाद भी काफी मोन्यूमेंटल चेंजेस आएंगे क्रिप्टो मार्केट्स में इन द यूएस, राइट? अभी उसको लेके काफी बातें चल रही हैं उनके गवर्नमेंट्स के बीच में,
उनके गवर्नमेंट और उनके लेजिस्लेशन जो चल रहा है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, voting and all these things, when it becomes a law, obviously there will be much more clarity regarding it, right? Now, Japan में crypto is obviously again legal and recognized, but these exchanges must be licensed, and there is very strict compliance after there have been hacks in these exchanges in the past. उसके बाद rules थोड़े complex हो गए हैं, but again it is safe, but it is a highly regulated environment कह सकते हैं in Japan, right? In the Europe, in the European Union, again there is regulation under MICA. What is MICA? MICA is a market in crypto assets, जो कि रेगुलेटरी बॉडी की तरह एक है, और यूरोपियन यूनियन के को वो पूरा मॉनिटर करता है. Rules must be clear for all these exchanges and stable coins and custody. But European Union, maybe it is very important that the consumer, the traders, investors are protected, and that is one of their top priorities, right? It is actually, अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन की जो क्रिप्टो मार्केट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट structured crypto markets in the world, in the world ही नहीं, globally I mean to say, right? When you, even when you compare it with the US and countries like Japan, European Union की जो crypto market है वो it is very much regulated, right? जितने भी वहाँ पर crypto platforms हैं, they are there is strict compliance, consumer protection comes first. Obviously there have been clear rules for all these exchanges, stable coins and all these things, right? So there is a kind of framework जो जुड़ा हुआ है. अब बात करते हैं ऐसी कंट्रीज की जहां पर रेगुलेशंस जो है वो पार्शियल हैं थोड़े, या ऐसी कंट्रीज जहां कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है, राइट? सो अमंग द टॉप देयर हैज टू बी इंडिया. इंडिया में क्या सीन है क्रिप्टो का मैं आपको बता देता हूं. लीगल तो है, बट करेंसी की तरह रेगुलेटेड नहीं है क्रिप्टो इन इंडिया दस फार, सो फार, ठीक है? नाउ गवर्नमेंट जो है वो 30% टैक्स लेती है ऑन योर प्रॉफिट्स. ये न्यूज काफी लोगों को बहुत बुरी लगी थी जब आई थी, but the government said that they'll be taking 30% tax on profits and 1% TDS on transactions, right? इसके अलावा the banks can support crypto businesses. There is a good amount of confidence that has been put into all these banks that they can back these crypto businesses. So crypto trading and regulations are basically, I mean, they are allowed, but what happens is that trading is very much expensive. It feels expensive, and this entire process becomes even more expensive when you talk about all these taxes that have come into the market. ये taxes की वजह से क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में एक्सपेंसिव लगने लग गई है, या है, ठीक है? Now we come to Canada. Canada is again another country wherein crypto is legal, but these exchanges must register as financial service providers, right? अगेन रूल्स लीवरेज को लेके और ये सारी चीजें जितने भी है, मार्केटिंग जितनी भी होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. अगेन जो अप्रोच है वो इन्वेस्टर सेफ्टी अप्रोच है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना सबसे प्राइम प्रायोरिटी है उनकी कनाडा में, राइट? अब मैं बताता हूं उन कंट्रीज की जहां पर ट्रेडिंग कंप्लीटली इलीगल है या बैंड है, राइट? China, one of the first examples where crypto trading and mining is completely banned. The focus is a very state controlled digital currency, CBDC. No private crypto is allowed, right? That's China. Now Afghanistan, again another country, crypto uses is banned, and obviously there are religious and financial concerns that are both cited here now. Okay,
अब हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की. आई वॉज लुकिंग एट ऑल दिस डेटा एंड how actually it's very similar to the topic for the day, which is how why do governments regulate cryptocurrency. I'm also looking at a few more people who are joined in, and I am looking at whatever comments that they have to make. If you can just give me a second, I will get back to the data regarding all these comments that you people are making. And whatever doubts that you have in your mind, I am ready to answer them one by one. I can see more people have joined in on the Zbit app. I will also check out YouTube as well, wherein more people are tuned in, right? So we are being joined by more and more people eventually, and I will get to a newer topic that says how do government policies and regulations affect crypto users such as you, such as me, such as all of us who are on Zbit or any other प्लेटफॉर्म. ये है आज का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरी मच इन सिंक विद द टॉपिक फॉर द डे, विच इज हाउ व्हाई डू गवर्नमेंट रेगुलेट. मैं ये देख रहा हूँ कि इफेक्ट कैसे करती है हमारे मार्केट्स को, राइट? दैट इज द टॉपिक. ना अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं. आई विल गेट टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स फर्स्ट एंड देन आई विल गेट बैक टू द negative effects of government regulations and government monitoring of crypto, right? Crypto markets, crypto assets, all of it, right? So number one reason is that फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट है ये. मैं आपको पहले बता दूं, पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करेंगे. फॉर ऑल ऑफ यू पीपल जस्ट जॉइन इन, हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिप्टो में गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस के या गवर्नमेंट मॉनिटरिंग रेगुलेशंस के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हम पे, राइट? क्यों करते हैं हमने पहले जान लिया है. व्हाई डज गवर्नमेंट मॉनिटर और रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के इफेक्ट्स हम देखेंगे और फिर इसको सम अप करेंगे इवेंचुअली, ठीक है? नंबर वन इज बेटर सेफ्टी एंड लेस फ्रॉड. ऑब्वियसली अगर आपका रेगुलेशन गवर्नमेंट का ऐसा है कि ये सारे एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग आर्स जीबिट भी, अगर आप जीबिट पे हैं या किसी भी किसी दूसरे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे भी आप हैं, तो आपको गवर्नमेंट की वजह से इन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को क्या करवाती है गवर्नमेंट, इनको सारे एएमएल रूल्स, केवाईसी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? वो फॉलो क्यों करने पड़ते हैं? ये आपके फायदे के लिए, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, कल को कोई फ्रॉड ना हो, कल को कोई मार्केट में आप किसी फेक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट ना कर दें. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे केवाईसी रूल्स और एएमएल रूल्स फॉलो करें, राइट? ये गवर्नमेंट्स करवाती हैं, तो इससे आप सेफ रहते हैं, फ्रॉड के चांसेस होना आपके लिए कम हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा, सिक्योरिटी बढ़ती है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स गेट इम्प्रूव्ड, राइट? दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द फर्स्ट पॉइंट कि केवाईसी और एएमएल रूल्स होते हैं, उनसे क्या होता है एक तरह से कि सिक्योरिटी बढ़ती है, राइट? थर्ड, स्कैम्स और फेक प्लेटफॉर्म से आप बचे रहते हैं. मैंने देखा है, और हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में भी मैंने बात करी थी अबाउट स्कैम्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी. किस किस तरह के स्कैम्स होते हैं मैंने ये आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था कैसे इनको अवॉइड कर सकते हो आप, राइट? तो यही स्कैम से आपको ये रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के हैं वो बचाते हैं, ये सारे एक्सचेंजेस पे, राइट? एक सेफर अगर इन्वायरमेंट होगा बिगिनर्स के लिए, तो आप ज्यादा तरक्की कर पाएंगे, ज्यादा सेफ एंड सिक्योर महसूस करोगे, तो आप ज्यादा कमा पाओगे और आप अपना हार्ड अर्न मनी लूज नहीं करोगे, राइट? नाउ अब मैं देख रहा हूं कि काफी सारे लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं, बट एक बार जाते जाते अगर आप यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं, मेरे पास थोड़ा ही देर गया, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर आपको बता देता हूँ. शायद आप लोगों ने अभी अभी ज्वाइन करा हो और आप मिस आउट कर गए हो. आई विल जस्ट लेट यू नो, यू कैन गेट 20,000 पेपे फ्रॉम माई साइड एब्सोल्युटली फ्री, and you can get 20,000 Shiba Inu also
from my side, absolutely free. All you have to do is deposit just $3 3 1 2 3 only $3 आपको डिपॉजिट करने हैं. इट्स अ वेरी मिनिमल, वेरी स्मॉल अमाउंट. एंड हम आपको अपनी तरफ से एज ए न्यू डिपॉजिटर आप हैं इसलिए हम आपको देंगे 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके $3 के साथ साथ फ्री. ठीक है, न्यू डिपॉजिटर हो तो मिस आउट मत करो, ले लो, आपका फायदा ही है इसमें. दूसरी बात, दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो यूजर्स के, गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से क्या होता है, ट्रस्ट और अडॉप्शन बढ़ता है. राइट, क्लियर लॉज होंगे तो आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे. ठीक है, क्लियर लॉज होंगे तो आप बैंक्स और कंपनीज को इस चीज के लिए भी प्रोत्साहित कर पाओगे कि हाँ भाई सपोर्ट करो क्रिप्टो को. राइट, फियर जो है वो घटेगा कि सडन बैन लग जाता है, कभी कभी गवर्नमेंट सडन बैन लगा देती है, वो नहीं लगाएगी क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट तो कर ही रही है. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट कीप्स रेगुलेटिंग, but there is smart regularization, and government's regulations kind of reduce the fear of people that someday cryptocurrency will get completely banned in my country. Right, so crypto feels much more legitimate and stable. ऐसा नहीं लगता कि ये कोई स्कैम है, कोई फ्रॉड है, कोई भी तरह का ये कोई भी तरह का ये एक जरिया है जहां से आपका हार्ड अर्न मनी आप खो सकें. राइट, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू become this platform becomes very safe, secure, feels legitimate, and becomes very stable. And this can only happen once the government keeps regulating it and keeps the trust and adoption of the users growing or increasing. Right, that is reason number 2. Reason number 3, भाई देखो, लीगल क्लैरिटी जिसे कहते हैं. अब सारे यूजर्स को पता है, आप नए भी यूजर हैं तो आप ये शायद जानते होंगे, अगर आप बिगिनर हैं, आप अभी शुरू कर रहे हैं क्रिप्टो की दुनिया में, अपना कदम आपने बढ़ाया ही है, तो आपको भी शायद एक तरह से ये पता होगा कि भाई क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, क्रिप्टो पे कितना टैक्स लगेगा, आपकी कंट्री में क्रिप्टो में कितना टैक्स लगता है आपको पता होगा. यू माइट नो how much is taxed in your country, that you are very sure of, right, when it comes to trading on a particular crypto platform, right, in your country. Now, which platforms are compliant, which are not, which compliant have necessary bodies that they are being they are complying to, and which bodies and which platform is fake. Right, तो ये जब होता है तो क्लैरिटी मिलती है, लीगल क्लैरिटी मिलती है, तो आपको कंफ्यूजन कम होता है, डाउट कम होते हैं, लीगल रिस्क के साथ आप सेफ रहते हैं. राइट, देयर आर फ्यूअर लीगल रिस्क इन्वॉल्व. दैट इज रीजन नंबर 3. नाउ अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की. नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेट करने के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट अगर रेगुलेट कर रही है तो गवर्नमेंट का भी कुछ अल्टीरियर मोटिव हो सकता है. उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं. सबसे बड़ा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है when it comes to government regulation, and the most important I think
the most single out aspect and something that is really bothering for all the users is that once the government starts regulating your crypto assets, cryptocurrency platforms, they tend to tax you, right? अब trading platforms such as cryptocurrency platforms such as all these coins, right, when they were launched, they didn't they always wanted to remove any hindrances when peer to peer transactions are being made possible. जब peer to peer transactions की बात आती है तो ये सारे coins, बिटकॉइन और ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व करते हैं, जितने भी जब ये आए थे मार्केट में, इनका बेसिक उद्देश्य, इनका बेसिक मोटिव यही था कि दे वांट टू यू नो रिमूव एनी हिंड्रेंस। मेरे को बैंक नहीं चाहिए बीच में। मैं अगर अपने फ्रेंड के साथ कोई एक ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं, आई डोंट वांट द I don't want a intermediary in between. I don't want a bank in between or the government in between. I want to make a transaction between him and me. But जब गवर्नमेंट रेगुलेट करना स्टार्ट करती है तो अब वो टैक्स भी करेगी। वो टैक्स करेगी तो अब आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर रहे थे, अब गवर्नमेंट अगर बीच में आ जाए तो टैक्स आ गया तो आपके विड्रॉल पे टैक्स लग रहा है, राइट, आपके प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है। अब ये सारी चीजें इवेंचुअली, अच्छा गवर्नमेंट प्रॉफिट पे टैक्स अलग से लगा रही है, लॉस पे नहीं लगाती, क्यों? ये तो गलत है। प्रॉफिट पे अगर आपको गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है आपके प्रॉफिट पे, तो लॉस भी तो आपका सहना चाहिए ना, गवर्नमेंट को आपका भागीदार बनना चाहिए उनको लॉस सहने में, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है। सो व्हाट हैपेंस इज पीपल डोंट फील like they are getting the most of the risk that they are taking। रिस्क भी मैं लूं, हाँ, और लॉस हुआ तो लॉस भी मैं झेलूं, प्रॉफिट मैं किसी तरह बना भी लूं तो मैं उस पे भी 30% दे रहा हूं। तो ये चीज जो है डजंट गो डाउन वेल विद अ लॉट ऑफ customers that are there in the cryptocurrency world, and they kind of feel like it's better to either invest in stock market only because at least I will not have to give 30% of my profits to the government, right? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं वो एक तरह से क्रिप्टो को कंप्लीटली मार ना दें, वो उसको एक तरह से रीशेप करें या स्मार्टली रेगुलेट करें, rather than just plainly taxing everything and just plainly putting tax on profits or withdrawals. It's important getting TDS and all these things. It's important that the government understands how um, they can reshape the entire industry. Look at cryptocurrency from the point of future, not just look at the negative aspects of it, the fact that it is being used by terrorists. Of course there are these obstacles that are going to be there, they are going to be probably there since for a very long time, right? But it's important for the government to look at it from a constructive point of view rather than a destructive point of view, because the easiest way here is to tax everything or just ban cryptocurrency, uh, all in all, right? But that is, in my view, it's not the right way to go about it. The better way to go about it would be to uh, smartly regulate the industry. The better way would be to not tax everything, and if you're taxing, at least don't tax just on the profits. The government should take a share of the uh, losses as well, but that I'm afraid no government will ever do that. If I am bearing a risk and taking a risk, I think that I have the whole right to, at least get the money that I have put my, risk on, and I don't think I should be sharing it with anyone, right? If the risk that I'm
taking is being taken only by me, then why should the government come in and bear the profits or bear the fruits of the risk that I took and it paid off, right? गवर्नमेंट क्यों मतलब रिस्क अगर मैं ले रहा हूं तो गवर्नमेंट क्यों ये इसमें प्रॉफिट कमा रही है, राइट? अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो रिस्क भी तो मैंने ही लिया था, गवर्नमेंट ने थोड़ी लिया था। तो इसी हिसाब से इट्स इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इसको कंस्ट्रक्टिव वे में देखे और इस नजरिए से देखे कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर ऑफ द world. It is the future of their economy as well, right? We moved from cash to banks. To, probably now the time is to move to crypto, right? And it very much looks like it is the future of the world. And it's important that the government sees in that point of view. If you've just joined, I would just like you to know that there is a big offer running on our app, and the offer is regarding the newly depositors money. The offer is about new depositors who are looking to make the most of their time on Zbit. If you are a new depositor, you are going to get 20,000 Pepe from my side absolutely free. That or 20,000 Shiba Inu from my side absolutely free. All you have to do is, all you have to do is just make a deposit of $3 on Zbit as a new depositor and just let me know your user ID. That's it. If you can just give me a second, I will be. I will stop sharing my screen now and 1 second. I am just looking to make right.
Right. So the topic for the day has been why do governments regulate cryptocurrency, and why do governments influence, and why do governments monitoring and regulation, what kind of effect does it have on potential customers and users of traders or investors on cryptocurrency platforms, right? That is the main topic for the day, and we've discussed that in quite a lot of detail. uh, if you can just give me a second, I am probably looking to uh, I am looking at a few more comments from you that are coming in on the Zbit live stream app, where it says, say something. GM sir, good morning to user 319159. A very good morning. I hope that you are liking our conversations. And this is the market that is there in front of me. Right. I am looking at all the comments that you are making on the app. I will meanwhile share my screen as well, so you can have a better understanding of the markets as well. I had it open in front of me since the last few minutes, but I am now looking to look at any other news that has come in. Right, right. There's plenty of news that is coming in. Uh, North American hours become the strongest window for Bitcoin returns, reversing late 2025 trend. Bitcoin is up nearly 10% in 2026. That's a very positive sign if you are listening in, and if you are tuned in on Zbit live streaming. Bitcoin is up nearly 10% in 2026. Look at where it is right now. It's at 95,000, and it is obviously going up and up and up. Um, with roughly 8% of cumulative returns coming during US market hours. Vero data shows the strongest returns occur between 2 p.m. and 4 p.m. UTC, immediately after the US market opens. And this news basically goes on to tell you that the US market and the North American market has basically been the major reason behind its rise. And North American are the most, they are the most
strong performing hours when it comes to making all the inflows and the outflows as well. So the US trading hours do not necessarily equate to activity driven by US based investors. Otherwise, performance during these hours reflect gains made across both US based and offshore exchanges such as Binance. US bias, okay. But Bitcoin linked stocks have done really well. That is the bottom line, and that is what all the articles that are related to Bitcoin are pointing towards. Ripple has won an early money license node in Luxembourg for Europe expansion. Obviously, Ripple is doing pretty well. It is expanding to Pakistan signs deal with WLFI linked crypto business was cross border payments. All right, that's how things stand. Right. The market is doing pretty well. If you see, we have just we went past all these news articles some time back. This is the latest one. It's been published 6 minutes ago. I will also have a look at it. Pakistan announced on Wednesday that it signed a deal to explore cross-border stablecoin payments with a company linked to World Liberty Financial, the crypto business tied to the U.S. President Donald Trump's family, according to a Reuters report. Pakistan which was subsequently PVARA said the agreement takes the form of a memorandum of understanding with SC Financial Technologies, a relatively obscure firm it described as an affiliated entity of World Liberty Financial. The memorandum sets the stage for technical cooperation on regulated stablecoin-based payment infrastructure. PVRA said the deal will support technical discussions around digital payment systems and new models for regulated cross-border settlement, signaling Pakistan's growing interest in stablecoins and blockchain-based infrastructure. This is very important news when it comes to cryptocurrency in Pakistan and how things will progress in the coming future in relation to stable coins as well. All right. Um, so the topic of the day, we'll get back to the topic of the day again, has been how and why do governments regulate cryptocurrency? What happens when they regulate cryptocurrency? Uh, we discussed how there are good points as well as there are bad points when it comes to cryptocurrency uh, and it being regulated by the government. We discussed why and how it affects users and how it makes customers think what and how their perspective changes when all these taxes are implemented, how whether they should continue investing on the platform or not, whether to walk out of crypto, all in all, it just really has a negative effect when it comes to these taxations and when the process
of the government's regulation goes beyond just regulating and to just taxing and taxing even more. So it's important how government realizes and does constructive work and doesn't kill the crypto industry um, completely. It's important that they reshape it and understand that smart regulation of the crypto industry, of the crypto exchanges, will help the industry grow further, and bad regulation will kind of push users away once and for all, right? That has been the main talking point from my point of view. I will also talk about how you can stay compliant as a crypto user and do your own job well when it comes to investing on a crypto platform, and also being safe and also being secure and right. So there is a list of pointers that we have for that as well. Number one being that you always trust and work with a regulated and trusted platform, right? One of them is obviously Zbit, right? A platform that is very much safe, secure, and easy for you to deposit and to make trades on, and so that you can eventually grow with the platform as well, right? We'll grow and we'll help and make sure that you'll grow as well, right? That is the main objective that we have here, that I as a host, as an anchor, have here to help you grow. Now, exchanges that do allow KYCs being done and AML, anti-money laundering rules are in place. You should always invest on such platforms, right? Make sure that these platforms are allowed in your country, and you can therefore reduce your own risk of these platforms being shut down later in the future or turning out to be a fraud or frozen, right? You should always allow avoid I'm sorry, you should always avoid unknown apps, links, or invite only platforms. Make sure that the platform that you are invested in is on iOS, is on Android, seems legit, seems secure, has KYC, AML rules intact, and allows you to be completely earn your trust, more importantly, rather than anything else, right? Number two is, from your end, you can complete your KYC properly, right? You should definitely make sure that you are putting in a valid government proof, valid ID. You've done your address verification, and you therefore can uh, and will be able to ensure. And now this is also the responsibility of the platform that you are investing on, that you are being asked of all these details. ऐसी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं और आपको ऐसी सारी डिटेल्स बतानी पड़ रही हैं, जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया, गवर्नमेंट प्रूफ हो गया। ये चीज़ें क्या करेंगी, ये इंश्योर करेंगी कि आपके विड्रॉल्स स्मूथली हो रहे हैं, आप लीगली बच पा रहे हैं। अगर जस्ट इन केस फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो आप उनसे बच पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने लीगल फ्रेमवर्क जो है आपने वो पूरा कर रखा है, और आपने कहीं कुछ लैग नहीं कर रहे हैं। आप अपने केवाईसी कंप्लीट करी हुई है, आप अपने एएमएल रूल्स से डिटेल्स फिल कर चुके हैं। सो इसमें आप अपनी तरफ से बस एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दें कि आप अपनी तरफ से कोई फेक डिटेल्स नहीं भर रहे हैं, और आपने अगर ऐसा कर दिया तो आपके जो फंड्स हैं वो कंप्लीटली परमानेंटली लॉक हो सकते हैं,
इसलिए make sure that once you invest on such platforms, you are keying in details that are genuine and not fake, right? This is point number two, completing your KYC. Point number one is that you should always use a regulated and trustworthy platform. Second is that you should always complete your KYC properly. Third is that you should track a keep record of your own transactions, when and at what price that you've bought it and what price are you selling it, right? Number two, dates, amounts, आप अपने end से अपना homework करके रखें. You should also know about transfers between your own wallets as well as airdrops, rewards, taking income. All these things you should be doing from your own end. That will help you stay secure, and you would have noted down all these details, and it will make tax filing for you very easy. It will make sure that you are avoiding penalties later, right? So it's important that these three things are done from your point of view. Now, I will come to point number four as well. Point number four. Point number four, when it comes to these, the ways that you can stay compliant when it comes to cryptocurrency exchanges or cryptocurrency platforms, आप अपनी तरफ से कैसे compliant रह सकते हैं, ठीक है, वो बता रहा हूं मैं. चौथा पॉइंट पे आने वाला हूं मैं. चौथा पॉइंट है, आप अपने क्रिप्टो टैक्सेस ऑनेस्टली पे करें. ठीक है, आप किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, पर वहां पर ये जानना और ये पता होना आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेस पे करने कैसे हैं, राइट? जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे हो गए, या लॉन्ग टर्म गेन्स पे कुछ कहीं कहीं टैक्स होता है, या स्टेकिंग और रिवॉर्ड इनकम होता है. आपको इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करो. ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रांजैक्शंस कहीं से छुपाओ नहीं, क्योंकि एक्सचेंजेस जितने हैं, ये सारे एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग जीबिट, वी रिपोर्ट आवर डेटा, एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर. और एक हिदायत और दूंगा कि आप एक क्रिप्टो जानने वाले सीए के साथ इन्वॉल्व रहें, टैक्स प्रोफेशनल के साथ इन्वॉल्व रहें. मेक श्योर दैट यू आर पेइंग योर क्रिप्टो टैक्सेस ऑनेस्टली, राइट? It's very important. Depending on your country, you are paying your crypto taxes honestly, else you might get into trouble later. आप अपनी तरफ से compliant रहें, हम बस at the end of the day यही चाहेंगे. Now, number five. Now, number five on the very same list of how you can be compliant from your end is securing your own wallet. How do you do that? It's very easy to secure your wallet. Number one, you should always enable two-factor authentication on exchanges, right? You've seen we've had two-factor authentication on social media websites as well now, and it becomes even more important and vital that आप अपने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे जिन पे आप जुड़े हुए हैं, जिनसे आप, या जो प्लेटफॉर्म्स पे आप एक्सचेंज कर रहे हैं, वहाँ पे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें, और अपना सीड फ्रेज किसी के साथ शेयर ना करें. इट विल रिजल्ट इनटू losing a lot amount of money. It might result into fraud, it might result into a scam. So you should stay aware of it, and it's important that you protect your assets as well as avoid suspicious activity flags, right?
This was number 5. Point number 5, I am discussing how you can stay compliant when it comes to all these crypto platforms that you are invested on. गवर्नमेंट तो रेगुलेशंस कर ही रही है अपनी, बट आप अपनी तरफ से कॉम्प्लाइंट कैसे रख सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ. पॉइंट नंबर 1 इज यू शुड ऑलवेज use a regulated and trusted platform for crypto exchange or trading, right? Platform like Zbit. You can obviously trust upon it. It is safe, secure, and transparent, and it is very much there, as a big name in the cryptocurrency industry. One. Number two, you should always complete your KYC and the AML documents, the rules that are anti-money laundering rules that are there in place. Number three, you should track your transactions, track every transaction, note down the dates, note down multiple wallets that you have, transfers between wallets, and buying and selling of the prices that which price was it that you bought it on, which price are you selling it on. Number four is that'll make number three. I'm going to focus more on three. Number three is that you should also that'll make taxing and filing taxes easy for you, and it'll help you avoid penalties later. Point number four was that you should pay your crypto taxes honestly, whether it is on your gains, your net profit, or it is trading profit, any profit. You should declare those profits and not hide transactions, because these exchanges report their own data. And so you should always have a crypto aware CA or tax consultant who can help you out when it comes to paying your crypto taxes honestly, right? पांचवा पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सिक्योर योर वॉलेट्स. कंप्लायंस का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्सेस भर रहे हैं खाली. कंप्लायंस का मतलब ये भी है आप सिक्योर रहें प्लेटफॉर्म पे. जब आप आए तो जब आप प्लेटफॉर्म पे आए तो आप अपना वॉलेट सिक्योर रखें, रिस्पॉन्सिबली उसे यूज करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड रखें, और अपने सीड फ्रेजेस किसी के साथ शेयर ना करें. कोई सपोर्ट टीम कभी आपसे कहीं पर भी सीड फ्रेज आपका नहीं मांगेगी. और आप अपने एसेट्स को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप प्लीज इसे किसी से शेयर ना करिए. किसी भी तरह के रेड फ्लैग में आप ना घुसिए. अपने आप को आप प्रोटेक्टेड रखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ, राइट? ये कुछ पॉइंट्स थे हाउ यू कैन स्टे इन compliance with the basic rules of crypto platforms and crypto exchanges. How you can from your own end as a customer, as a consumer, आप कैसे बचे रह सकते हैं. नाउ अगर आप अभी नए हैं प्लेटफॉर्म पे, I have an offer for you, and that offer is very much about how you can deposit more money on Zbit and get 20,000 Pepe free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको 20,000 पेपे और 20,000 शिबा इनू इनमें से एक दे रहा हूं. लेकिन एक शर्त है, आप नए डिपॉजिटर होने चाहिए. आप 3 USD डिपॉजिट करिए Zbit पे और आपको मिलेंगे 20,000 पेपे या 20,000 Shiba Inu from my side, absolutely free of cost. Free of cost. So make this deposit. Don't miss out on this giveaway offer that I have for you. If you are listening to me and if you're a new depositor, just need to deposit 3 USD from your own side, and I will be giving you 20,000 USD, 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side, absolutely free of cost, right? You can have a look at Pepe as well as Shiba Inu here. This is Pepe. It has seen a 17% rise in the recent 24 hours. In the last 24 hours, it has seen a 20 it has seen a 17% hike, and I am giving you 20,000 Pepe free of cost. Free of cost. 20,000 Pepe free of cost.
Not just this, I am also giving you Shiba Inu, 20,000 Shiba Inu from my side, absolutely free of cost. 20,000 Shiba Inu free of cost. And all you have to do is just deposit. What are you waiting for? Don't miss out on this opportunity. Just deposit $3 $3 पे ही आपको इतना कुछ मिल रहा है. मेरे को नहीं लगता इससे बेटर ऑफर कुछ हो सकता है. आपको 20,000 पे या 20,000 शिबा इनू चाहिए अगर, तो बस $3 आपको डिपॉजिट करने हैं ऑन जीबिट एज अ न्यू डिपॉजिटर. नए डिपॉजिटर हैं, जस्ट ज्वाइन करा है अभी जीबिट. आराम से 20,000 पे लो या 20,000 शिबा इनू लो, वट एवर ऑफ योर चॉइस, and just deposit $3. That's all you have to do. I am live on the live streaming app on Zbit. On the short time frame, a pullback is expected, right? I am not sure about what this was about. सर मीम कॉइन के बारे में डिस्कस करो. मीम कॉइन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. I had discussed meme coin in the very recent future, in the very recent past, in my live session last time.
when the topic was major cryptocurrencies in the market. I had discussed that to answer Canny's question. I had discussed about meme coin in the last session. We discussed about Dogecoin. We discussed about Shiba Inu. We discussed about Pepe coins. These are all meme coins. इनके बारे में मैंने डिस्कस करा था, how they were launched, when they were launched, and whether you should invest in meme coins or not as well. ये भी मैंने आपको सजेशन दिया था. And how the market kind of reacts to these meme coins, because these coins are obviously built on hype and momentum. तो मैंने इन coins के बारे में जब आपको बताया था, तो मेरे को याद है कि मैंने meme coins के बारे में आपको ये बताया था कि इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से ना देखें तो ज़्यादा बेटर है. इट इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट विच यू मेक, मतलब एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसको देख रहे हैं तो ज़्यादा सही है. बिकॉज इनका हाइप अभी बन रहा है, जब तक बन रहा है तब तक बन रहा है, कभी ये गिर जाए कुछ पता नहीं होता है. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इन मीम कॉइन्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लें, जान लें, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें. जब ये बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि लोगों को डाउट रहता है कि मीम कॉइन में इन्वेस्ट करें या ना करें. तो मेरा सजेशन ये था, अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल की ना करो कह सकते हैं लोग, मैंने कहा था कि आप इन्वेस्ट करिए. यू शुड इन्वेस्ट ऑन दीज कॉइन्स एंड you should be cautious though about the nature of them, right? Because they are growing on hype, and they are growing on momentum that is being created on social media. There is this buzz or this viral trend, probably they're of probably why they are getting popular, right? So that was the conversation around meme coins. हमने पेपे कॉइन का लोगो भी देखा था, मुझे याद है मैंने शिबा इनू का भी आपको लोगो दिखाया था, डॉज का भी दिखाया था, because that was the topic for the day. The topic for today has been why do governments control, regulate, cryptocurrencies, right? And if you are just joined in, all of you users, I welcome you to Zbit's live streaming session. I welcome you to the Zbit platform as well. If you are joined in and haven't made any kind of deposit, तो आपके लिए एक ऑफर है. आई एम हियर विद द ऑफर. आई विल जस्ट रीट्रीट द ऑफर अगेन. ऑफर ये है कि आपको मेरी तरफ से मैं दे रहा हूं, अगर आप नए डिपॉजिटर हैं, न्यू डिपॉजिटर हैं, तो मैं आपको दे रहा हूं 20,000 पेपे और 20,000 शिबा इनू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कुछ नहीं करना है, आपको $3 बस डिपॉजिट करना है और कुछ नहीं करना. इट इज एज सिंपल एज दैट. आप आराम से डिपॉजिट करिए और आप मेरे को अपना यूजर आईडी शेयर करिए. मैं आपको दूंगा 20,000 पेपे या तो फिर 20,000 शिबा इनू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट?
जाते जाते आज का मैं एक और टॉपिक आई वुड लाइक टू कवर फ्रॉम माय एंड, which is again related to government policies and government you know regulations that are brought in. uh, आज का क्योंकि टॉपिक यही रहा है कि हाउ डू गवर्नमेंट्स और व्हाई डू गवर्नमेंट्स रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। तो मैं आपको बस जाने से पहले एक और सिमिलर टॉपिक जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, I will discuss it in slight detail. That is how regulation exactly helps crypto prices, right? Whether they rise, whether they fall. क्या होता है कि जब regulations आते हैं मार्केट में या गवर्नमेंट्स कुछ अपने regulations अपने एंड से लाती है, तो उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट्स में क्या उतार चढ़ाव आता है, बढ़ते हैं प्राइसेस, घटते हैं प्राइसेस, क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब रेगुलेशन कैसे हेल्प करता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ट्रस्ट और लेजिटिमेसी बिल्ड होती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको थोड़ा सेफ लगता है, उनको लगता है कि हाँ भाई क्लियर कॉन्साइज प्लेन सिंपल रूल्स आ गए हैं, अब गवर्नमेंट खुद इसको रेगुलेट कर रही है, तो इन्वेस्टर्स काइंड ऑफ फील सिक्योर, ठीक है कल को मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। Long term capital increases obviously, but prices eventually stabilize and grow over time. इससे एक stability kind of market में आ जाती है, and it is again a very good thing when it comes to a market such as even even crypto markets that are so volatile. अगर regulations आती है market में ट्रस्ट और लेजिटिमेसी की वजह से इवेंचुअली प्राइस में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, जो इवेंचुअली ग्रो करता है ओवर टाइम, राइट? सो दैट इज रीजन नंबर वन। सेकेंड, मार्केट्स में स्कैम्स और मिसकंसेप्शंस कम हो जाते हैं, मार्केट की मैनिपुलेशन कम हो जाती है, फेक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं इन रेगुलेशंस की वजह से, फ्रॉड्स कम हो जाते हैं, एक्सचेंजेस जैसे जीबिट है या कोई भी और बाइनेंस है, बहुत सारे हैं, उनमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और आ जाती है, राइट? सो दिस इज हाउ जो क्रैशेस होते हैं फ्रॉड्स की वजह से इवेंचुअली फिर वो घट जाते हैं। जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है एक तरह से, दे आर they denote a healthy atmosphere, they denote a healthier price action because of reduced scams and market manipulation, right? That is only possible when the government steps in and brings in some kind of regulation, ठीक है? नेक्स्ट, मास अडॉप्शन आता है और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये समझ के कि क्रिप्टो मार्केट में अब ट्रस्ट पैदा हो रहा है लोगों का, गवर्नमेंट इसे अच्छे से रेगुलेट कर रही है और लीगल क्रिप्टो बिजनेसेस भी और आने लगते हैं, राइट? साथ ही साथ और भी लोग धीरे धीरे क्रिप्टो एप्स डाउनलोड करते हैं, धीरे धीरे क्रिप्टो पे स्विच करने का सोचते हैं, पार्टिसिपेशन जो की है वो बढ़ जाती है, राइट? मास अडॉप्शन होता है एप्स का, इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स का, और अगेन वही वाली बात है, मोर डिमांड मोर सप्लाई प्राइस सपोर्ट, सब कुछ होता है, मोर यूजर्स इज इक्वल टू मोर डिमांड इवेंचुअली, राइट? नाउ अब रेगुलेशन खाली पॉजिटिव इफेक्ट ही नहीं डालती है मार्केट पे, रेगुलेशन ऑल्सो प्लेज अ रोल नेगेटिवली एज वेल। गवर्नमेंट की रेगुलेशन प्राइसेस को हर्ट भी करती है, कैसे करती है मैं बताता हूँ। जैसे कभी कभी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करती है गवर्नमेंट की, नया टैक्स आने वाला है, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में अभी 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट लगने लग गया है, ऑन क्रिप्टो प्रॉफिट्स। ऐसे में ऐसे अनाउंसमेंट्स की वजह से, नए टैक्स की वजह से लोग कोशिश करते हैं कि इससे पहले मार्केट के बारे में, जब गवर्नमेंट इतनी कंफ्यूज्ड है, गवर्नमेंट इतनी जल्दी-जल्दी नए रूल्स ला रही है, इतने खतरनाक भयानक रूल्स ला रही है या इतने इंडस्ट्री एंडिंग बिल्कुल रूल्स लॉन्च कर रही है, ला रही है, तो लोग क्या करते हैं मार्केट से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इमीडिएट सेल ऑफ्स होते हैं, कॉम्प्लायंस क्रैकडाउन्स होते हैं, नए टैक्स आ जाते हैं तो लोगों को डर लग जाता है कि आज ये कह रहे हैं कल क्या कहेंगे, राइट? इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस कंस्ट्रक्टिव हो रादर दैन डिस्ट्रक्टिव, राइट? नंबर टू, अनसर्टेनिटी बनाते हैं मार्केट में, इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ हार्श और अनक्लियर पॉलिसीज जो होती हैं गवर्नमेंट की, दे
they create some kind of uncertainty, and they create an atmosphere of confusion. They eventually push all these users away, maybe even potential users away, right? इससे क्या होता है, इनोवेशन भी रुक जाती है, राइट? इससे क्या होता है कि प्राइस में ड्रॉप आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो है नहीं लोगों को। लोग अनश्योर हैं कि ये अ, हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, ये कर रही होगी अपने रीजंस की वजह से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इस मार्केट में घुसना चाहिए, क्योंकि ये इस कब तक है किसी को कुछ पता नहीं है, कब बंद हो जाए इसका कुछ पता नहीं है, और इस पे कब हैवी टैक्सिंग हो जाए ये भी कुछ नहीं पता है। इसीलिए टैक्सेस जो हैं, वो रेगुलेशंस जो हैं गवर्नमेंट के, वो इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो रेगुलेशन अगर सही हो रही है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ साइन है, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, और इट विल ऑब्वियसली हेड इन द राइट डायरेक्शन। बट अगर रेगुलेशन सही नहीं है, या केओटिक है, सडन है, या नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, तो वो प्राइसेस को इवेंचुअली हर्ट करेगी ही करेगी। सडनली भी कर सकती है, और सडनली करने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, बिकॉज इमिजिएटली it will see a reaction from investors and traders who are there since a very long time as well in the market, right? Market is something that doesn't actually fear any rules as such, but market ऐसी होती है जिस जो अनसर्टेनिटी से तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, कंफ्यूजन से या सडन न्यूज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। रूल्स एक बार जो लाए गए हैं, अगर अच्छे के लिए लाए गए हैं तो अच्छा ही है, नहीं लाए गए हैं तो अनसर्टेनिटी पैदा ना करें एटलीस्ट गवर्नमेंट के रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वेलकम यू ऑल टू द लाइव स्ट्रीम, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा टॉपिक ऑफ द डे आज था व्हाई डू गवर्नमेंट्स रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। तो हमने उसके बारे में बात करी कि भाई बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, टैक्स इवेजन होता है, इलिसिट क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स होते हैं, राइट? थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है गवर्नमेंट को, थोड़ा मॉनेटरीली सोवरेनिटी मेंटेन करनी होती है गवर्नमेंट को, और टैक्स कॉम्प्लायंस इंश्योर करना होता है कि लोग सारे टैक्स भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, ये देखना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो हमने आज इन डेप्थ जाना है कि क्यों गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है रेगुलेट करना, और गवर्नमेंट क्यों करती है। हमने फिर ये भी जाना कि गवर्नमेंट के रेगुलेट करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और अभी इवेंचुअली मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस प्राइस को पॉजिटिवली कैसे इफेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिवली कैसे कर सकते हैं, ये भी बताया। पॉजिटिव में मैंने आपको बताया कि ये कैसे ट्रस्ट और लेजिटिमेसी बढ़ाता है, तो उससे प्राइस जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, जो कि अच्छा साइन है, और ग्रो करता है, ओवर टाइम ग्रो करता है, ठीक है। पॉजिटिव में मैंने आपको ये भी बताया कि स्कैम्स और मैनिपुलेशन रुक जाते हैं, क्योंकि सब कुछ चेक में रहता है, फेक प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, रेगुलेशंस जो हैं वो हर चीज़ को पे निगरानी रखते हैं, काबू रखते हैं, क्रैशेस कम होते हैं। तीसरा मैंने बताया कि मास अडॉप्शन जो है वो इनकरेज करता है, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स डाउनलोड करेंगे ऐप को, और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे, इंडस्ट्री की तरफ मूव करेंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बढ़िया हैं, तो लोग डिमांड बढ़ती है ऑब्वियसली ऐसे ऐप्स की, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की, राइट? तो यूज़र्स ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस उसी हिसाब से सपोर्ट भी करेगा उसे। अब मैंने आपको ये भी बताया कि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशंस हैं वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेगेटिवली कैसे कर सकते हैं? अब अगर गवर्नमेंट अनसर्टेनिटी का माहौल बना रही है, या गवर्नमेंट जल्दी जल्दी ऐसे खतरनाक रूल्स ला रही है, या खतरनाक टैक्सिंग पॉलिसी ला रही है, खतरनाक विड्रॉल रिलेटेड न्यूज़ ला रही है, तो अनसर्टेनिटी पैदा होती है मार्केट में। और ये मार्केट ऐसी चीज़ है जो मार्केट किसी रूल से नहीं डरती, लेकिन मार्केट अनसर्टेनिटी से बहुत डरती है, कंफ्यूजन, केओस, ये मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं जो हड़कंप मचा देती हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट की चीज़ें सडन ना हो, वेग ना हो, और एक क्लियर आइडिया और एक क्लियर इंटेंशन के साथ
काफ़ी मतलब जैसे कहेंगे ना, काफ़ी डिस्कशंस के बाद आने वाली पॉलिसीज़ हों, ऐसे हों, राइट? रादर दैन खतरनाक खतरनाक पॉलिसीज़ ऐसी जो यूज़र्स को पुश कर दें क्रिप्टो से कोसों दूर, और कंस्ट्रक्टिव हों, अनसर्टेनिटी ना पैदा करें, डिस्ट्रक्टिव ना हों, और इनोवेशन को रोक ना दें, फ्रीज़ ना कर दें। क्योंकि ऐसा होगा तो कॉन्फिडेंस लूज़ होगा कस्टमर्स का, यूज़र्स का, लोगों का क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री के प्रति कॉन्फिडेंस जो है वो घटेगा, और दे विल इवेंचुअली फील लाइक स्टॉक मार्केट ही बढ़िया है अपना, और ये इस तरफ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लग सकता है लोगों को। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि रेगुलेशन जो है वो ऐसी हो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ज़्यादा हो, रादर दैन ऐसी जो प्राइस को हर्ट करे। बैड रेगुलेशन नहीं चाहिए, ठीक है? ये था हमारा टॉपिक फॉर द डे, कंप्लीटली कवर्ड, डन एंड डस्टेड फ्रॉम माय व्यू. I have talked about, government policies, and why do governments regulate cryptocurrency platforms. What is the positive and negative effect of government's regulation, and how government's regulation actually affect price. We have also discussed that today. I have enjoyed talking to all of you, and if you have a few more questions for me, I will look to answer them one by one. I can, I have answered Scott CR7's questions today. He had plenty of doubts, and I answered all of them. I have also answered questions जो आप हमारे YouTube लाइव पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो मैंने उनके भी क्वेश्चन आंसर करें। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूँ, अभी भी 7 मिनट रह गए हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए डिपॉजिटर हैं और आपने आज का गिव अवे ऑफर नहीं सुना है तो सुन लो, आपको फायदा दे सकता है। आज का गिव अवे ऑफर ये है कि आपको मेरी तरफ से 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। फ्री यानी बिल्कुल फ्री, आपने कुछ नहीं करना है, आपने खाली 3 US डॉलर्स डिपॉजिट करने हैं अपने Zbit अकाउंट में, और कुछ नहीं करना है। एज अ न्यू डिपॉजिटर, दिस इज द डिपॉजिट ऑफर दैट आई हैव फॉर यू टुडे। इफ यू हैव नॉट मेड मोस्ट ऑफ इट, इट इज योर लॉस। आप इसको यूज करिए, इस्तेमाल करिए, और अपना फायदा कीजिए। मिस मत करिए, आज है कल नहीं होगा। अगर आप नए यूजर हैं तो आप श्योरली इसे मिस आउट मत करिए। प्लीज डिपॉजिट 3, जस्ट 3, आई एम आस्किंग फॉर 3, मिनिमम 3। 3 या 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट इज $3, and you will get 20,000 Pepe, and 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side absolutely free. पेपे का बता दूं, 17% ग्रोथ हुआ है लास्ट 24 घंटे में। 17% ग्रोथ। तो अगर आप मिस आउट कर रहे हो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज 17% हुआ है, कल और भी 17% हो सकता है, शायद ज्यादा भी हो सकता है, शायद कम भी हो सकता है, लेकिन signs are very good. Pepe has seen, and even Dogecoin has seen a very good rise. तो आप मिस आउट मत कीजिए। इट इज लास्ट 5 मिनट्स, आई विल बी हेडिंग ऑफ। मेरे जाने का वक्त आ गया है। और आप अगर आपने डिपॉजिट नहीं करा है तो डिपॉजिट कर लो, नहीं करा तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मेरे रहते रहते कर लोगे तो आपको 20,000 शीबा इनू या 20,000 पेपे मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा मेरे रहते रहते। I am here for the next 2-3 minutes. I hope you liked the topic of the day. I really love talking to you about the topic for the day, that was why do governments regulate cryptocurrency. I discussed that in quite a lot of detail, and yeah, I also have this offer for you that I explained. आपको मेरी तरफ से 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। लेने वाले ले चुके हैं ऑलरेडी,
आपने नहीं लिया है अगर एज अ न्यू डिपॉजिटर, तो आप मिस आउट कर रहे हो। ले लो, जल्दी से जल्दी ले लो। और आपने उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने 3 US डॉलर्स डिपॉजिट करने हैं बस। डिपॉजिट तो आप वैसे भी करोगे, शायद आप डिपॉजिट करो तो आपको शिबा इनू या डॉज शिबा इनू या पेपे ना मिले। अगर ऐसे ही रैंडमली डिपॉजिट करोगे तो मेरे रहते हुए कर लोगे तो आपको 3 US डॉलर्स मिनिमम बस डालना है, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह भी नहीं रहा। मेरी तरफ से 20 शिबा इनू या 20 पेपे फ्री चाहिए तो ले लो, वरना मैं जा रहा हूँ। आई होप दैट यू हैड अ गुड टाइम। आई रियली लव टॉकिंग टू यू टुडे। और मैंने सारे कॉन्वर्सेशन आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी है। People who are tuned in on YouTube as well as on uh, the Zbet app. I welcome all of you users who are just joining in. I have had some wonderful conversations around why do governments regulate cryptocurrency. आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे ये था। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा और आई विल बी बैक विद अनदर गिव अवे ऑफर। आज का गिव अवे जाते जाते एक और बार बता देता हूँ। इफ यू हैव नॉट डिपॉजिटेड एंड इफ यू आर अ न्यू डिपॉजिटर, पहली बार डिपॉजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम डिपॉजिटर हो, पहली बार डिपॉजिट कर रहे हो, तो फिर आपको मेरी तरफ से 20,000 शिबा इनू और 20,000 पेपे इनमें से एक फ्री मिलेगा। आपने कुछ नहीं करना, बस $3 मिनिमम डालने हैं अपने ही अकाउंट में। और बस मुझे बता दो यूज़र आईडी, बस। I welcome all of you to the chat. I will be heading out on that note. I have really enjoyed talking to all of you today, and I hope that आपको भी मज़ा आया होगा आज की conversations में। I will be back with a newer topic tomorrow at very much same time. I hope that you enjoyed our conversations today. I certainly loved talking to you and indulging in all these conversations today. And I hope that you will be here tomorrow. Any more questions regarding the giveaway? If you have not deposited, all you need to deposit is just 20,000 to get 20,000 USD. You all you need to do is deposit 3 USD and you will get 20,000 Pepe or Shiba Inu from my side absolutely free. That was the giveaway offer for today. अगर आपने मिस आउट कर दिया, अभी एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आप ले सकते हैं इसे। On that note, I will be heading out. Uh, and I will be here tomorrow as well. Stay tuned. I hope that you enjoyed our conversations. Till we meet tomorrow, goodbye, take care, stay healthy, and we will see you tomorrow. Goodbye.